Hello, hello, hello. Hello, 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 hello. हेलो ये यहाँ से आ गए। आदिल भाई जब बैठे हैं ना बढ़िया। अब ये बोलते रहेगा, रुकेगा नहीं बस ये बोलना ही है। आगे ही बोल रहे हैं। नहीं ये बता डेलस वाले क्या कहते हैं? डेलस वाले यार इंग्लिश पता है यार। ये जो है ना टेबल का है, मतलब ये बोलिए ना ये टेबल का है। ये सीरियस यू इंप्रेस ये नहीं बोलो कि आगे छोटा है। वो लाइव चल रहा है। मैं इसको कम। अच्छा ये सब आप बंद कर दें, जो शोर आ रहा है ना इनमें से इनको बंद करें। कौन सा कोई एक यहाँ से ऑफ कर दो, यहाँ से है? हाँ, और नीचे वाला ही बंद करें, ऊपर वाला ही आप करें। हेलो ये मेरी किधर माइक्रोसॉफ्ट वही याद है मेरा। अच्छा वो मैं एक दो टेप आपको देता हूँ। हेलो अच्छा ये चाबियाँ रिमोट का है आपके पास। अभी तो आप आवाज़ आती है? टेस्टिंग टेस्टिंग हेलो
Hello, testing. 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 Hello. Hello, testing. Hello. Hello, testing. Hello. Hello, testing. Hello.
जी वेलकम टू लाइव कवरेज। आज हमारा सेकंड डे है और टेक्सास इनविटेशनल कप का, और अभी वी आर ऑल सेट टू गो, जस्ट वेटिंग फॉर द टॉस। और उसके बाद विल अपडेट ये जो लास्ट, अब जो स्कोर कार्ड आपको नज़र आ रहा है, दैट वाज फॉर द लास्ट नाइट गेम, और विल कीप यू पोस्टेड। वी जस्ट अबाउट टू गेट रेडी फॉर द सेकंड डे ऑफ टेक्सास कप। Hello testing, hello testing.
जी, वेलकम टू द लाइव कवरेज ऑफ टेक्सास कप 2022। ये गेम चल रहा है इस वक्त अफगान टाइगर्स वर्सेस थंडरबोल्ट्स। और ये आप पहला ओवर का गेम शुरू हुआ है। अफगान टाइगर्स वक्त बैटिंग कर रहे हैं और ये पहला सेकंड डे है हमारे टूर्नामेंट का। वी हैड सम टेक्निकल इश्यूज, तो ज़्यादा लाइव कवरेज नहीं कर सके हम लोग कल। आज इंशाल्लाह जो है वी ऑल सॉर्टेड आउट, रेडी टू गो। और थैंक्स फॉर लिसनिंग इन। ये दूसरी टीम थंडरबोल्ट्स जो है वो डैलस से आई है और वो अच्छी बॉल कराई, पुल करना चाहते थे लेकिन कनेक्ट नहीं कर पाए और बाय मिलेगा बैट्समैन को। एक और व्यू हमारे कैमरा से, मच क्लियर व्यू। और इस वक्त जो है बैटिंग कर रहे हैं खैबर वन टाइगर्स के, उनके साथ नूर जमान है और अस्करी जो है वो पहला ओवर करा रहे हैं। 5 रन बन चुके, आगे बढ़ के निकलने की कोशिश की, अच्छा शॉट खेला और पहली बाउंड्री फॉर द गेम। अच्छा शॉट खेला, एग्रेसिव माइंड के साथ आगे गए बॉल के ऊपर और कनेक्ट करने में कामयाब हुए और बाउंड्री मिली। वन टाइगर्स का ये दूसरा गेम है और अच्छी बॉल थी, पुल करना चाहते थे, मिस किया। और इसके साथ साथ पहले ओवर का खेल ख़त्म हुआ है। पहले ओवर के बाद उनका स्कोर हुआ है थंडरबोल्ट्स वन टाइगर्स का 9 रन्स। अच्छा स्टार्ट है, 9 रन्स एक ओवर में बुरा स्कोर तो नहीं है, लेकिन आपको पता है कि टेप बॉल T10 में काफ़ी बड़े स्कोर हो रहे हैं और यूजुअली होते हैं। जस्ट अ रिमाइंडर कि ये टेक्सास कप इनविटेशनल 2022 का सेकंड डे और इस वक्त जो है ग्रुप बी का गेम चल रहा है। वन टाइगर्स ने 2 गेम खेल चुके हैं और दोनों जीत गए हैं और ये इनका 3rd गेम है। तो अच्छी स्ट्रॉन्ग टीम लग रही है वन टाइगर्स की। ये ह्यूस्टन की लोकल टीम है, ह्यूस्टन के लोग खेल रहे हैं इसमें। और अभी जो है आपका ये खूबसूरत स्टेडियम, ईसा क्रिकेट क्लब का एक्सीलेंट ब्यूटीफुल स्टेडियम। नई नई चीज़ें आपको हमेशा यहाँ आते हैं हमें मिलती हैं। एक और भी आपको ये ट्राई विजन स्क्रीन लगी है यहाँ पे, जो कि आप देख सकते हैं। और उसमें अनाउंसमेंट है वर्ल्ड कप 2023 की, टेप बॉल वर्ल्ड कप की। बहुत ही खूबसूरत स्टेडियम है फॉर हार्ड बॉल एंड टेप बॉल। अभी रिसेंटली जो है वो एक नेट्स ऐड किया है, इट्स अबाउट 30 फीट। सो उससे बहुत फ़ायदा मिल रहा है टीमों को, अदरवाइज बॉल जो है वो काफ़ी दूसरी तरफ जाती हैं। दूसरे ओवर का खेल का शुरू होने वाला है और इस वक्त आए हैं बॉलिंग करने मिनहाज। और लेग की तरफ बॉल थी, अंपायर ने वाइड कॉल की। अच्छे पेस के साथ बॉल की थी उन्होंने, लेकिन लाइन थोड़ी सी गड़बड़ हुई और इससे एक एक्स्ट्रा रन मिला
अफगान टाइगर्स को। अफगान टाइगर्स का ये तीसरा गेम है, दोनों गेम वो जीत चुके हैं और दे आर लुकिंग गुड टू क्वालिफाई फॉर द सेमीफाइनल्स। और हमारे पास दूसरी फील्ड में इस वक्त दूसरा गेम जारी है जो कि चार्जर्स वर्सेस जीएम स्पोर्ट्स। जस्ट अ रिमाइंडर, वी हैव 8 टीम्स इन दिस टूर्नामेंट और हर ग्रुप में जो है वो 4 टीमें हैं। Everybody will play with each other और top 2 teams will go to the semi-finals। और इस वक्त सेकेंड डे का खेल जारी है। आज जो है वो 6 गेम स्केड्यूल हैं। पहला गेम अभी थंडरबोल्ट वर्सेस अफगान टाइगर्स का है। थंडरबोल्ट जो है वो ह्यूस्टन से आई है, डैलस से विजिट कर रही है। अफगान टीम जो है वो लोकल ह्यूस्टन की टीम है। बॉल कराई लेग की तरफ थी। जस्ट रिमाइंडर, देयर इज नो लेग बाय और फ्लिक करने में कामयाब रहे हैं और 1 रन मिलेगा। कुछ जो स्क्रीन में कुछ इश्यूज लग रहा है, सेट करने के लिए आए हैं। गेम थोड़ी देर के लिए रुका हुआ है, कुछ साइड स्क्रीन के विजन का इशू है। अगेन ये सब ब्रांड न्यू ट्राई विजन स्क्रीन वी जस्ट इंस्टॉल और इसमें जो है यू कैन चेंज द एंगल, चेंज द व्यू। इट्स ट्राई विजन। तो खेल थोड़ी देर के लिए इस वक्त रुका हुआ है। गोइंग बैक टू द टूर्नामेंट फॉर्मेट, वी हैव 8 टीम्स प्लेइंग इन दिस टूर्नामेंट। 2 ग्रुप हैं। इस वक्त जो है ग्रुप बी का गेम जारी है। ग्रुप बी में अफगान टाइगर्स ने 2 खेले हैं, 2 गेम हुए हैं, दोनों जीते हैं। और इसके अलावा इनके साथ चार्जर्स और जीएम स्पोर्ट्स हैं अभी दूसरे स्टेडियम में और दूसरे फील्ड में। चार्जर्स का गेम जारी है जीएम स्पोर्ट्स पे, तो इम्पॉर्टेंट गेम है चार्जर्स के लिए भी। ये एक गेम वो खेले हैं, ऑलरेडी वो लॉस कर चुके हैं, so they have to win this game to stay in this tournament। So we'll take a short break and we'll be right back।
और खेल रिज्यूम हुआ है। साइड स्क्रीन पे कुछ इशू था, वी आर सॉल्विंग इट। और अभी दोबारा कुछ इशू नज़र आ रहा है। खेल थोड़ी देर के लिए इस वक्त दोबारा रुक चुका है। ट्राइंग टू टेक पॉज, और जैसे ही इस इशू सॉल्व होता है रिज्यूम द कवरेज। और खेल जो है वो शुरू होने वाला है दोबारा। सॉर्ट आउट तो हुआ है फील लाइक। तो इस वक्त जो है मिनहाज बॉलिंग कर रहे हैं। अपनी तीसरी बॉल, 1 विकेट ले चुके हैं। अच्छी बॉलिंग उन्होंने की है अब तक। और स्कोर जो है इस वक्त 13 विद लॉस ऑफ 1 विकेट। और सेकेंड ओवर का गेम जो है इज़ इन प्रोग्रेस। जस्ट अ रिमाइंडर, इट इज़ 10 ओवर्स गेम पर साइड। तो सेकेंड ओवर का गेम जारी है। इस वक्त जो है वन टाइगर्स बैटिंग कर रही है। अच्छा शॉट खेला टूवर्ड्स द फाइन लेग, शॉर्ट बॉल थी, इस दफ़ा कनेक्ट करने में कामयाब रहे। और इसी तरह एक बाउंड्री मिलेगी अफगान टाइगर्स को। अफगान टाइगर्स का ये तीसरा गेम है। दे हैव वन 2 गेम्स ऑलरेडी। ये लुकिंग प्रीटी स्ट्रॉन्ग। अफगान टाइगर्स जो है ह्यूस्टन की लोकल टीम है। और ये अच्छा शॉट खेला था उन्होंने। ओह अच्छी बॉल, गुड कम बैक। और कीपर से मिस हुई। और ये बाय के 4 रन मिलेंगे। अच्छी कम बैक बॉल थी कि लेकिन कीपर बॉल को कलेक्ट नहीं कर पाए। और इस तरह जो है 4 रन का और इजाफा अफगान टाइगर्स के स्कोर में। और एंड ऑफ सेकेंड ओवर स्कोर हैज मूव्ड अप टू 22, लॉस ऑफ 1 विकेट। जो लोग हमें अभी ज्वाइन कर रहे हैं, ये हमारा सेकंड डे है टेक्सास कप का। और इसमें 8 टीमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं। और सेकंड डे का गेम जारी है। और कल टुमारो देयर विल बी सेमीफाइनल्स एंड फाइनल्स। और 4 टीमों का 2 ग्रुप हैं। 2 टीम्स विल क्वालिफाई फॉर द प्ले ऑफ। बहुत अच्छी बॉल थी, लेग की तरफ खेलना चाहते थे, नहीं कनेक्ट कर पाया। एज पर द रूल ऑफ द टूर्नामेंट देयर इज नो लेग बाय।
तरह डॉट बॉल हुई. डॉट बॉल जो है वो T10 में मेक्स अ बिग डिफरेंस, एड्स अ लॉट ऑफ प्रेशर टू द बैट्समैन. कंटिन्यू करेंगे. ताहा, और बहुत अच्छी बॉल थी, अच्छी बॉल मिस हुई. एक और डॉट बॉल. इसी तरह प्रेशर ऐड हो रहा है बैट्समैन को. अजमल जो है वो बैटिंग कर रहे हैं. he only scored 2 runs in 4 balls. You can imagine he's under pressure. और बॉल अच्छी बॉल, एक और ऑफ की तरफ खेला और क्विक सिंगल लिया. I think that was a wise decision because Khyber on the other hand striking at the rate of 200. So it's looking pretty good for Afghan Tigers. तो अच्छा डिसीजन अजमल का. इन्होंने रोटेट किया. 2 बॉल डॉट करने के बाद प्रेशर ऐड होता है. ऑफ कोर्स दिस इज शॉर्ट फॉर्मेट, probably the shortest format, 10 overs per side. तो अच्छा डिसीजन लिया और सिंगल लिया. और अच्छी बॉल की, लेग की तरफ थी, कनेक्ट करना चाहते थे, मिस किया बैट्समैन ने. और एक एक्स्ट्रा रन मिलेगा अफगान टाइगर्स को. थंडरबोल्ट्स जो है उन्हें हमें ज्वाइन किया है डैलस से. तो दे ड्रोव ऑल द वे फ्रॉम डैलस. सो वी वेलकम देम हियर इन ह्यूस्टन and I'm sure they will enjoy this facility. ICC MC facility, one of a kind, I would say, in Houston. It has a professionally installed floodlights. It has 2 fields. और इस वक्त जो है वो दोनों फील्ड्स में गेम जारी है. और शॉट थी, स्लो बॉल थी, अच्छा पिक किया बैट्समैन ने. और इस तरह इनको 6 रन मिलेंगे. बहुत अच्छी डिलीवरी थी. इन्होंने डिसीव करने की कोशिश की खैबर को, बट ही वॉज रेडी, वेटेड फॉर द बॉल एंड पुल्ड इट. और इस तरह 6 रन मिलेंगे अफगान टाइगर्स को. उसका जो टोटल स्कोर 31 हो चुका है. लुकिंग प्रीटी गुड फॉर अफगान टाइगर. लेग की तरफ खेला टुवर्ड्स द फाइन लेग और एक ही रन मिलेगा. गुड फील्डिंग बाय थंडरबोल्ट्स प्लेयर. अजमल स्ट्राइक पे हैं. एक दफ़ा फिर जाने दिया, बट अंपायर ने वाइट कॉल की और एक्स्ट्रा रन मिला अफगान टाइगर्स को. थंडरबोल्ट्स की जो प्लेयर्स कुछ अंडर प्रेशर लग रहे हैं. 33 रन ऑलरेडी हो चुके हैं और 3rd ओवर चल रहा है. अच्छी बॉल थी, ड्राइव करना चाहते थे बस स्ट्रेट टू द बॉलर और डॉट बॉल आई है. और इस तरह एंड ऑफ द 3rd ओवर स्कोर मूव अप टू 33, द लॉस ऑफ 1 विकेट. 3 overs ख़त्म. इस तरह पावर प्ले, जस्ट अ रिमाइंडर, इट्स a 10 overs game and first 3 overs are power play. You can only have 2 outside in power play and after that you can have 5 outside. अच्छा ओवर रहा अफगान टाइगर्स के लिए. इसमें 11 रन आए. ताहा ने अच्छी बॉलिंग कराई, टॉस बॉल भी थी पर कुछ एक्स्ट्रा दिए. आप देखें फवाद आए हैं बॉल करने. दिस इज हिज फर्स्ट ओवर. अमजद इज ऑन स्ट्राइक. ही इज प्लेइंग प्रीटी गुड इन 21 in 9 balls. So Afghan Tigers has only lost 1 wicket so far. ये भी स्लो बॉलर हैं. दिस अ नाइस बॉल. और वेट किया बॉल का, लेकिन बॉल काफ़ी स्पिन हुई और इस तरह बॉल को कनेक्ट नहीं कर पाए. इट्स अ गुड बॉलिंग और अच्छी बॉल. और इस तरह आउट होने में कामयाब. बहुत ही अच्छी डिलीवरी थी, लेग की तरफ थी, फ्लिक करना चाहते थे टूवर्ड्स द मिड विकेट. आउटसाइड एज लगी और अच्छा कैच पकड़ा बॉलर ने. इस तरह डेंजर खैबर जो कि 21 रन पे खेल रहे थे इन 10 balls, he has lost his wicket. Now one tiger has lost his 2nd wicket. और फवाद अच्छा बॉल, दोनों पहली बॉल भी बहुत अच्छी थी, बहुत टर्न हुई, ऑफ साइड पे थी, उसको कनेक्ट नहीं, इन्होंने बॉल को छोड़ी. सेकंड बॉल को लेग की तरफ आई. ही वांटेड टू
play towards the mid wicket, but got the outside edge and straight to the fielder. और इस तरह वन टाइगर लॉस्ट their second wicket. और नए बैट्समैन आए हैं शेर समान, लेफ्ट हैंड बैट्समैन. फवाद कंटिन्यू करेंगे. और लेग की तरफ ही चेंज किया पेस आई थिंक, और लेग की तरफ चली गई और इस तरह एक रन का एक्स्ट्रा मिला वन टाइगर्स को. व्हेन द बैट्समैन चेंजेस फ्रॉम राइट टू लेफ्ट, बॉलर को थोड़ा एडजस्ट करना पड़ता है. यू ऑलवेज हैव सम डिफिकल्टी. और ये तो बिल्कुल ही बाहर बॉल और इस तरह वाइड बॉल मिली और 2 एक्स्ट्रा रन आ गए. पहले 2 बॉलों पे डॉट आया था, 2 बॉल नेक्स्ट बॉल उन्होंने एक्स्ट्रा की. आई थिंक दैट्स बिकॉज ऑफ द चेंज ऑफ द बैट्समैन. ये अच्छी बॉल डॉट बॉल मिली. इस तरह गुड बॉलिंग बाय फवाद, ओनली गिवन 2 runs so far and both of them were from wide. और आगे निकल के मारना चाहते थे बट नहीं कनेक्ट कर पाए. अच्छी बॉलर है, वेरी डिसीविंग इंटरेस्टिंग बॉलर फवाद. और एक और अच्छी बॉल पुल करना चाहते थे. मैं को हार्ड स्लॉक स्वीप करना चाहते थे बट मिस द बॉल कंप्लीटली. और इसी तरह ओनली कोई एक और डॉट बॉल आई है. तो इस ओवर में अब तक जो है सिर्फ 2 रन मिले हैं, वो भी एक्स्ट्रा के. एक और भी बहुत अच्छी बॉल, वेरी नाइस बॉल. और अंपायर से अपील की बट ऑफ कोर्स देयर इज नो LBW, सो अंपायर ने कोई तवज्जो नहीं दी. और इस तरह ये बहुत ही अच्छा ओवर ख़त्म हुआ फवाद का. He only gave 2 runs and got 1 wicket. The end of 4th over, one Tigers moved up to 35, the loss of 2 wickets. अभी भी 6 ओवर्स की गेम बाकी है, काफ़ी गेम बाकी है. और इस वक्त जो स्ट्राइक पे हैं अजमल हैं आएंगे. उन्होंने सिर्फ जो है वो 3 रन बनाए हैं 6 बॉल्स पे, 3 डॉट बॉल खेली हैं. तो ऑफ कोर्स he may be under pressure and he will probably want to go big. Last night जो है वो score 10 overs में it was about 90. One Tigers defended 82 runs against Chargers, so they have a good bowling line up as well. So let's see how they do it today. और एक और very tempting ball, बहुत फ्लाइट की और अजमल ने वेट किया कि शायद बॉल वाइड हो. अंपायर ने वाइड कॉल नहीं की ऑफ कोर्स. डिफरेंट टाइप का जो इनका जो बॉलिंग एक्शन है वो वेरी डिफरेंट. एंड आई थिंक ही इज यूजिंग लॉट ऑफ हिज फिंगर्स, क्योंकि जो बैट्समैन को कंफ्यूज है. यू एक्सपेक्ट बॉल टू कम रियली फास्ट एंड फ्यूरियस इन टेप बॉल, और इस तरह स्लो बॉल से यू गेट कंफ्यूज समटाइम एज अ बैट्समैन कि व्हाट टू डू विद दोस काइंड ऑफ बॉल. आगे निकले, ओ मिस किया कीपर ने शायद. इट वाज अ स्टंप चांस बट कीपर couldn't collect the ball cleanly and batsman survived. I think Ajmal jo hai, he's in a tremendous pressure. He only scored 3 runs in 9 balls and you're playing 10 overs game, so you can imagine that he must be under pressure. और एक और फ्लाइट बॉल फिर मिस की है. I mean, I think he's losing his balance. He's not picking up the length. He's not picking up the line as well. और इस तरह प्रेशर आगे निकले फिर और क्विक सिंगल लेंगे इस दफा और डायरेक्ट थ्रो. और इस तरह अजमल की मुश्किल हुई आसान और वो 3 रन बना के रन आउट हो गए. बहुत ही अच्छा ओवर करवाया ये असद ने. kept Ajmal under pressure from the ball 1, was swinging the ball, spinning the ball I would say, or he couldn't connect the ball at all. The ball, he couldn't pick up his line, length. So different type का उनका action है, आपने देखा. But let's see how it goes. It seems like Thunderbolts are coming back and they're coming back with the slow bowling. So अच्छा change किया
थंडरबोल्ट्स ने पहले 2 ओवर में आई थिंक दे वर ऑलरेडी अराउंड 30. So अभी 5वां ओवर का गेम इज ऑलमोस्ट बी ओवर 1 बॉल रिमेनिंग इन द 5th ओवर एंड दे ऑलरेडी स्कोर 30, only scored 35. So good pull back by Thunderbolts. और अच्छी बॉल लिजवा कनेक्ट करने में शायद कामयाब हुए और ये शायद ड्रॉप कर दिया और इस तरह he was juggling and he couldn't collect the ball और इस तरह उनके जो है एक चांस मिला शीर जमान को और इस तरह at the end of 5th over the score moved up to 36. They already lost 3 wickets. 5 more overs remaining. I think 5 overs में अफगान टाइगर्स की बॉलिंग जो है वो काफ़ी अच्छी है. As I said yesterday, they were able to defend 82 against Chargers. Chargers is also a very well-known local team of Houston. They have a good players in their team. Ronnie, one of very famous player of Houston, plays for Charger. I think they have one more game currently going on in the second field. So that tells us that Afghan Tigers has a decent bowling lineup as well. So let's see how it goes. Now Asad came back. Now this is his second over. He only gave 1 run in first over. So अच्छी ball थी, connect करना चाहते थे. He got so disappointed on himself. He got the edge, and Afghan Tiger lost their 4th wicket. Now batsman is furious. I think he's furious on himself because ball जो है थी was there to hit and he completely missed the ball and got the outside edge and simple catched his keeper. Now one Tiger lost the 4th wicket. There is some silence on the dugout from the one Tiger side. If you are tuning us in and listening to us, this is the second day of Texas Cup. We have 8 teams participating in this tournament, and this is the last day of the league games, and tomorrow we will have semi-finals and finals. Top 2 teams from each pool will go to the playoff, which is like semi-finals, and then we'll have finals tomorrow. ईसा क्रिकेट क्लब एंड मल्टी स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स की ये फैसिलिटी है. अमेजिंग फैसिलिटी. आई वुड से इन ह्यूस्टन अच्छी बॉल थी, ब्लैक की तरफ थी, अंपायर ने उसको वाइट कॉल की. वेल लेफ्ट बाय बैट्समैन. इस वक्त जो है वो अहमद आए हैं बैटिंग करने के लिए और ताहा का ये सेकंड ओवर है. फर्स्ट ओवर में ही गिव 11 रन्स और 12 रन्स और अच्छी बॉल और इस दफा सिर्फ डॉट ही मिलेगा. अच्छी बॉल थी, बहुत अच्छी लाइन और लेंथ से बॉलिंग कर रहे हैं थंडरबोल्ट्स. दे डिडंट लेट अफगान टाइगर्स गेट अवे. और अच्छी बॉल थी, लेग की तरफ खेला उन्होंने, लेग की तरफ थी. बड़ा शॉट खेलना चाहते थे बट ही कुडंट कनेक्ट वेल एंड जस्ट अ सिंगल. अच्छी पोजीशन है इस वक्त थंडरबोल्ट्स की. दे हैव जॉइंड अस फ्रॉम डैलस. वी सर्टनली वेलकम देम और उनको ह्यूस्टन में खुशामदीद कहते हैं. होप कि दे एंजॉयिंग द फैसिलिटी एंड आल्सो इट्स अ ब्यूटीफुल वेदर टू प्ले. बहुत ही अच्छा वेदर है ह्यूस्टन में इस वक्त और स्प्रिंग इज अबाउट टू स्टार्ट लाइक. तो बहुत ही नाइस वेरी प्लेजेंट वेदर इन ह्यूस्टन. ब्यूटीफुल वेदर टू प्ले क्रिकेट. और ये वाइड बॉल थी. आई थिंक अंपायर ने नो बॉल कॉल की है. बेस हाइट थी और इसी तरह ये फ्री हिट मिलेगी अफगान टाइगर्स को. प्रॉब्ली दे नीड दैट. दे नीड टू गेट द मोमेंटम बैक. रिमेंबर दे स्टार्टेड प्रीटी वेल. दे वर लाइक 30 और रन्स ऑड रन्स 2 ओवर्स. और उसके बाद थंडरबोल्ट्स ने पुल बैक किया और बोल्ड कर दिया. बहुत ही बट इट्स अ फ्री हिट बट बहुत ही अच्छी इंटेलिजेंट बॉलिंग की इन्होंने. और इस तरह जो है पुल किया. बॉल वाज नॉट देयर टू पुल. बहुत ही लेंथ काफ़ी आगे थी बॉल को लेकिन ही जस्ट वेंट फॉर इट
because it was a free hit. So no damage done to a one Tigers, but they still missed the ball. अच्छी ball, अच्छा खेला towards the gully और एक ही रन मिलेगा. The batsman wants to change the bat. I'm not sure if it's a bat or a batsman himself, but seems like they're not scoring as fast as they want. So let's see क्या होता है. इस तरह भी 6 ओवर गेम जारी है and they only scored 40. I would say only because you keep in mind it's a 10 overs game. इस तरह जो है आप देखेंगे कि कुछ डिस्कशन है. एक बॉल remaining, 1 ball to go. इस वक्त जो है अहमद फेस कर रहे हैं. 6 ओवर के गेम जारी, 40 स्कोर. ओह वेरी नाइस बॉल टुवर्ड्स द लेग. खेलना चाहते थे लेग की तरफ लेकिन नहीं कनेक्ट कर पाए. बहुत ही अच्छी बॉलिंग की है ताहा ने. ही फिनिश सेकंड ओवर दैट. सो जस्ट कीप इन माइंड द मैक्सिमम लिमिट फॉर ओ बॉलर इज 2. सो ही फिनिश हिज कोटा 2 ओवर्स. 2 ओवर में जो है 15 रन दिए हैं. लॉस्ट वन एंड ही गॉट 1 विकेट. So score is 40. End of over number 6. They already lost 4 wickets. अच्छा मैच. I think it's going to be a good game. बहुत अच्छा टाइट बॉलिंग कर रहे हैं Thunderbolts के. I can imagine they drove all the way from Dallas, so they must be a strong team. Odd ball, short ball थी, स्लो बॉल थी और इस तरह कामयाब हुए अहमद बॉल पिक करने में और टूवर्ड्स द फाइन लेग उन्होंने पुल किया और इस तरह ये 4 रन मिलेंगे. He was able to get under the ball और इस तरह बाउंड्री, मच नीडेड बाउंड्री फॉर वन टाइगर. और एक और बॉल को जिस पुल किया, just I think he took his eyes off the ball और he just went for it. Tapeball में भी यही है कि you still need to have a proper timing. You need to still have a proper basic of playing a shot of a keep eyes on the ball. और इसी तरह लाइन पे खेलने का जिस तरह भी आप खेलना चाहते हैं, you just cannot just go blindly to hit the ball. एक ही रन मिलेगा इस तरह वन टाइगर्स को. स्कोर जो है 47 और इस वक्त 7th ओवर का गेम चल रहा है. बहुत ही अच्छी बॉलिंग की है. वेरी नाइस टाइट बॉलिंग बाय थंडरबोल्ट्स. ये फवाद का दूसरा ओवर है और इसका और लेग पे बॉल की कनेक्ट करने में कामयाब हुए और इस तरह ये बाउंड्री मिलेगी. Welcome boundary for our one Tigers. Much needed, I would say, because score was only now moved up to 51. 7th ओवर का गेम जारी है. Still long way to go. I mean 3 more overs to go. तो भी इनको काफ़ी बड़ा स्कोर तो चाहिए, लेकिन इसके लिए जो है बड़े शॉट्स चाहिए. अच्छी डिलीवरी और अच्छा रन लिया. कीपर की तरफ थ्रो फेंका लेकिन बैट्समैन कामयाब हो गए रन कंप्लीट करने के लिए. वेरी नाइस बॉलिंग जो कर रहे हैं. और हमने व्यू चेंज किया है. अच्छी बॉल, दोबारा खेलना चाहते थे मिड विकेट की तरफ, लेंथ उनको नहीं मिली और जस्ट 1 run added to the score. Score moved up to 53 और that's the end of this over number 7. जो है वन टाइगर्स का जो स्कोर 53 हो चुका है. 3 more overs remaining in this inning. अच्छा ओवर आया ये जो लास्ट ओवर ख़त्म हुआ है. they scored about 13 runs in the last over. They needed a big run, so they were able to get some runs in the last over. There's still 3 more overs to go.
मेरे ख्याल में if they get to like 70 or probably 80, then it may have a fight. Anything below, I would say 70, maybe easy target for the team. और बहुत अच्छी बॉल थी, पुल किया, बॉल थी ऑफ पे, खेलने गए लेग पे और आउटसाइड एज लगी और बहुत ही अच्छा कैच पकड़ा कीपर ने. इस तरह एक और अफगान टाइगर्स की विकेट गिरी और अहमद जो है वो आउट हुए हैं. बहुत अच्छी बॉल थी, बिल्कुल ऑफ पे इन्होंने बॉल की और वो गए लेग की तरफ खेलने के लिए. ये थोड़ा डिफिकल्ट होता है, अगेन टेप बॉल तो है, बट यू स्टिल हैव टू मेक श्योर यू प्ले अ प्रॉपर शॉट and just don't lose your balance a lot. Otherwise, if you don't have a balance, then you probably won't be able to hit where you want to hit. ज़ेबी आए हैं नए बैट्समैन और अच्छा शॉट खेला है टूवर्ड्स द फाइन लेग और 4 रन मिलेंगे. बहुत शफल किया उन्होंने. He wanted to confuse bowler, but bowler kept the line really good, but Zebi picked it up very well towards the fine leg for 4 runs. अस्करी अपना सेकंड ओवर करवा रहे हैं. आगे निकले और बहुत अच्छा पिक किया और ये 6 रन्स मिलेंगे. बहुत अच्छा शॉट देवी का. Much needed boundaries Afghan Tigers are getting. This is the 8th over in progress. They still have 2 more over to go. Score जो है moved up to 63 with a loss of 5 wickets. Now they're heading towards a decent total. Again, anything above 80 probably have a good total. Let's see, because Afghan Tigers were able to defend 82 against Chargers last night. और अच्छी बॉल, स्कूप शॉट खेलना चाहते थे बट मिस की बॉल और कोई रन नहीं मिलेगा. अस्करी अच्छे पेस से बॉल करा रहे हैं. It seems like he has a good decent pace. Zebi picked him up really well. First 2 balls he sent to boundaries. और चेंज ऑफ पेस पिक किया, मिड विकेट की तरफ खेला और कैच ड्रॉप हुआ. दैट सीम्स लाइक कैच ड्रॉप हुआ है. अच्छा कनेक्ट किया था जेबी ने, लेकिन अच्छी फील्डिंग हुई. आई थिंक ही ड्रॉप द कैच एज वेल. स्कोर जो है मूव अप टू 64. 3 to continue. This is his last ball. Oh, probably on the offside. Umpire called it wide. लास्ट 2 ओवर्स से इससे पहले वाले ओवर में 13 रन आए थे. इस वाले ओवर में they already scored like 12. Yes, this need like 13, about 14, 15 in last over, right? Now seems like they may be able to get to 90. Oh, अच्छी बॉल थी, पुल किया अगेन, ऑफ की तरफ थी. He wanted to pull the ball towards the leg side. अगर वो उस बॉल को ऑफ पे खेलते तो शायद कुछ स्कोर बना सकते थे. अच्छे पेस के साथ बॉलिंग कर रहे हैं. At the end of the 8th over, the score moved up to 65. इस वक्त USA टेप बॉल का सीजन काफ़ी बिजी है. You can go to USA टेप बॉल क्रिकेट YouTube page पे. You can see all the events coming up, all the calendars that we have put together. Amir Siddiqui, Naved, these are working really hard on this USA tape ball cricket. We have so much events lined up. August May we have a national championship. We had a very successful championship last August. Now we're looking forward for one more national USA tape ball national championship in August. Last time we had teams across from New York, from California. They came and joined us and really had a blast. It was amazing, excellent display of talent across the nation. The second version US National Championship will be held in August this year.
दिस कप इज टेक्सास कप, इसमें टेक्सास की टीमें हैं, डैलस से जो अब टीम थंडरबोल्ट्स जॉइंड अस from Dallas. I'm sure they're enjoying the facility, one of the best facility to play cricket in. It has a professionally installed floodlights, as you can see. Just putting the tri-vision, and we have a huge LED screen also, which will probably show towards the when we have semi-finals and finals. You can check out all the facility in detail on your YouTube of USA Tapeball cricket. Asad continue कर रहे हैं. This is the 9th over going on. Again slow ball, able to, he completely missed the ball. ये चेंज किया पेस को और उसके लिए जो है वो जेबी कनेक्ट नहीं कर पाए. जेबी ऑन 11, 5 बॉलें खेली हैं, 11 पे खेल रहे हैं. एक और स्लो बॉल, फ्लाइटेड बॉल, बट ही वाज एबल टू पिक दिस बॉल अप for a huge 6 towards the mid-wicket region. The slow ball के लिए इस दफ़ा उन्होंने इंतज़ार किया. He didn't rush to hit the ball. He waited for the ball and able to connect it very, very cleanly. और जो है 9th ओवर चल रहा है, 72 स्कोर हो चुका है. Look seems like, oh बॉल अच्छी बॉल, स्लो बॉल इज फिर हालांकि इस दफ़ा बॉल का वेट किया लेकिन ही couldn't connect the ball and wanted to play towards the mid wicket again. Ball was mostly towards the offside, probably offside पे खेलने की ट्राई करते तो शायद इसका बन जाता. आगे निकले, फिर मिड विकेट की तरफ खेला और 2 रन लेने के लिए जाएंगे. अच्छी रनिंग बिटवीन द विकेट, वेरी गुड रनिंग बिटवीन द विकेट, और इस तरह जो है 2 रन लेने में कामयाब. स्कोर जो है वह 74 हो चुका है. 9th ओवर का खेल इस वक्त जारी है. और पुल किया, शॉर्ट बॉल थी, पुल किया और बहुत अच्छी रनिंग बिटवीन द विकेट. एक्सीलेंट रनिंग स्पेशली बाय अहमद. इस तरह 2 रन और मिलेंगे और एक और अच्छा ओवर. इस दफ़ा सिर्फ 12 रन आए लास्ट 3 ओवर से. दे आर स्कोरिंग मोर देन 10 पर ओवर. 76 हो चुके हैं. 1 मोर ओवर टू गो इन दिस इनिंग. बहुत ही अच्छी रनिंग हुई है बिटवीन द विकेट इन लास्ट 2 बॉल्स. क्विक सिंगल्स, दैट्स व्हाट दे नीड. 1 मोर ओवर टू गो. They should look to score at least 90. They will have some decent score to go into 90s. Last night, one Tigers ने है वो Chargers को के खिलाफ they were able to defend 82. So that tells us कि इनकी अच्छी decent bowling lineup भी है one Tigers की. One Tigers जो है वो local team है Houston की. लास्ट ओवर का गेम इस वक्त शुरू होता चाहता है. मिनहाज आए हैं. पहले ओवर में उन्होंने 12 रन दिए थे, एक विकेट भी ली थी. क्या करते हैं, थोड़ा सा फील्ड एडजस्टमेंट. लास्ट ओवर है और अफगान टाइगर्स आई एम श्योर दे विल गो फुल गन और थंडरबोल्ट्स चाहेंगे कि वो कम रन दे सकें. और देखा आपने बैट्समैन पहले ही बाहर निकल गए साथ साथ बॉलर के. It's a good running. इस तरह 1 रन बनेगा. स्लो बॉल अगेन, बहुत अच्छा चेंज ऑफ पेस जो है वो इससे डिसीव हो जाता है बैट्समैन. बिकॉज टेप बॉल में मैंने देखा यही है कि बैट्समैन दे वांट टू हिट एज हार्ड एज पॉसिबल. उसमें अगर बॉल स्लो है तो ये यूजुअली यूज देयर टाइमिंग. और एक बहुत अच्छा पिक किया जेबी ने. एक्सीलेंट पिक बाय जेबी. और शॉर्ट बॉल थी और जेबी ने काफ़ी शफल किया, कंफ्यूज किया बॉलर को, एंड ही वाज एबल टू पिक द स्पॉट वेयर ही वांटेड टू हिट. और 6 रन मिल गए. इस तरह स्कोर मूव अप टू 83. और इस तरह लेग ऑफ की बॉल थी. अगेन लेग की तरफ खेलना चाहते थे और इस दफ़ा कनेक्ट नहीं कर पाए. स्कोर जो है वो 83 हो चुका है.
3 more balls to go. और बहुत अच्छी डिलीवरी की और चेंज ऑफ पेस था, बट बॉल टर्न जो है वो ऑफ से बाहर, थोड़ा ज़्यादा बाहर निकल गई. अंपायर ने वाइड कॉल की. एक एक्स्ट्रा रन मिलेगा. 2 more balls to go. Score is 84. If they were able to get to 90, then it's pretty decent score, I would say. और बॉल अच्छी बॉल कराई और अंपायर ने नो बॉल से वे साइड और नो बॉल अंपायर ने कॉल की है. और इस तरह ये एक्स्ट्रा रन भी मिलेगा और फ्री हिट भी मिलेगी. नो नीड फॉर दैट फ्रॉम थंडरबोल्ट्स पॉइंट ऑफ व्यू. Just finish those 2 last balls of the inning and put up and come up against a not too bad of a target. और बॉल अच्छा पिक किया. मिडिल पे बॉल थी. स्लो बॉल. ज़ेबी दूसरा रन और निकल गए दूसरे रन के लिए और दूसरा रन लेने में कामयाब. एक्सीलेंट रनिंग बिटवीन द विकेट ज़ेबी और अहमद के दरमियान. These runs really matters a lot when you have a close game. जो इस तरह runs जो आते हैं वो बहुत बड़ा डिफरेंस बनाते हैं. लास्ट बॉल है 87 स्कोर हो चुका है. ज़ेबी ने बहुत अच्छी बैटिंग की. He came and when they lost got a quick wickets and then he scored 30 in 14 balls. और ये फिर शायद no ball होगी. I think bowlers is putting too much effort, maybe more effort what is needed to finish the ball, finish the over, and now he got extra run. So free hit है और 2 बॉलें बाकी हैं. और मिड विकेट की तरफ खेले. फील्डर वहाँ मौजूद हैं और बहुत ही एक्सीलेंट रनिंग बिटवीन द विकेट और शायद तीसरे के लिए जाना चाहते हैं लेकिन नहीं बना पाएंगे. और वेरी गुड रनिंग बिटवीन द विकेट बिटवीन ज़ेबी एंड अहमद. स्कोर मूव्ड अप टू 89 और लास्ट बॉल बाकी है. क्या वो 90 बना पाएंगे? मुझे तो लग रहा है बना लेंगे. एक बॉल है. बॉल अच्छी बॉल. बहुत ही अच्छी डिलीवरी. ऑफ की बॉल. अच्छी लाइन, अच्छी लेंथ. बॉल मिस की बट they were able to get to 1 by. तो इस तरह एंड ऑफ 10 overs अफगान टाइगर्स ने 90 रन बनाए हैं एंड दे नीड थंडरबोल्ट्स नीड 91 टू विन. बहुत ही अच्छा हुई पहली इनिंग की. और we'll take a break and we'll come back with the coverage of the second inning. Stay tuned.
वेलकम बैक। अभी सेकेंड इनिंग का स्कोर जो है वो शुरू होने वाला है। जस्ट वेटिंग फॉर ऑल द प्लेयर्स फील्ड सेटअप एंड बैट्समैन जस्ट वॉकिंग इन। वेलकम बैक। ये है इस वक्त सेकेंड इनिंग स्कोर हो चुका है जारी, और पहली बॉल जो है वो कराई है। वेलकम बैक। सेकेंड इनिंग का स्टार्ट हो चुकी है और अगेन दे टारगेट चेसिंग 91 जो है, और अफगान टाइगर्स ने जो है वो 90 स्कोर किया है। टारगेट जो है वो 91 है। इस वक्त घनी बॉल करवा रहे हैं गनी, और उनकी तरफ से अनु और फहद जो है वो बैटिंग पे आए हैं। 7 रन ऑलरेडी स्कोर्ड। अच्छा शॉट खेला बाउंड्री के लिए। शॉर्ट बॉल थी, अच्छी बॉल थी और अपील की, लेकिन कामयाब नहीं हुई अपील, और इस तरह जो है डॉट बॉल आई है। कंटिन्यू करेंगे, बॉलर अरुण जो है वो फेस करेंगे, और थर्ड मैन की तरफ खेला है। 2 रन लेने की कोशिश कर रहे हैं और इस तरह ये 4 रन मिले हैं। अच्छा शॉट खेला, टाइम किया उन्होंने, कुछ ज़्यादा पावर नहीं लगा इस शॉट में,
और ऑफ की तरफ शॉर्ट बॉल थी और सही डायरेक्शन में बॉल खेली और 4 रन मिले। वेरी गुड शॉट। अच्छा स्टार्ट हुआ है थंडरबोल्ट्स की तरफ से। ऑलरेडी स्कोर्ड 11 रन और अभी पहले ओवर का खेल जारी है। लास्ट बॉल है इस ओवर की और अच्छी बॉल और अपील की, कॉट बिहाइंड की और बैट्समैन अपनी जगह से नहीं हिल रहे हैं और ना ही अंपायर हिले। बाकी तो सारे ही हिल रहे हैं फील्डर्स, लेकिन लगता है कि ये आउट अंपायर ने नहीं दिया। अच्छी बॉल थी, शॉट थी, ऑफ पे थी, वो वही बॉल रिपीट, वही शॉट रिपीट करना चाहते थे पर इस दफ़ा वो कनेक्ट नहीं कर पाए। और अफगान टाइगर्स जो है वो लोकल टीम है ह्यूस्टन की। बहुत ही एनिमेटेड प्लेयर्स हैं अफगान टाइगर्स के, जैसे आपने देखा पहली इनिंग में भी। आई वुड से दे स्कोर डिसेंट 90 runs in 10 overs. It's pretty decent. और जैसे मैंने आपको बताया था कि लास्ट नाइट दे वर एबल टू डिफेंड 82 अगेंस्ट चार्जर्स, जो कि ह्यूस्टन की अच्छी टीमों में शुमार होती है। सो दैट इज टेलिंग अस दे डू हैव सम डिसेंट बॉलिंग लाइन अप। द एंड ऑफ द ओवर 1 दे स्कोर्ड 11 runs। अभी तक कोई विकेट नहीं गिरी है। इट्स अ गुड स्टार्ट। शाहिद आए हैं बॉल करने के लिए। अच्छी बॉल थी, ऑफ पे थी, लाइन और लेंथ अच्छी है, बहुत ही अच्छी लाइन पे कर रहे हैं और डॉट बॉल मिली है। अच्छी डिसेंट पेस भी है बॉलर का। और लेग पे हुई, लेग की बॉल थी और बॉल थोड़ी स्विंग भी हुई। जैसे आपको एज पर टूर्नामेंट रूल्स देयर इज नो लेग बाय, तो इस तरह ये डॉट बॉल मिलेगी। अच्छा स्टार्ट किया है शाहिद ने, अब तक 2 बॉलें की हैं, दोनों में डॉट हुआ है। इस तरह जो रिक्वायर्ड रन रेट है वो 9.25 है, स्टिल अंडर कंट्रोल। और अभी सेकंड ओवर की गेम जारी है और गुड थिंग इज दे हैव नॉट लॉस्ट एनी विकेट्स। तो अच्छा अभी स्टार्ट, आई वुड से इट्स अ डिसेंट स्टार्ट, इट्स अ क्वाइट बट इट्स डिसेंट स्टार्ट बाय थंडरबोल्ट्स। और बहुत अच्छी बॉल, बहुत स्विंग हुई। आई होप यू कैन पिक दिस अप कि बॉल ने बहुत स्विंग इनसाइड हुई है और अच्छा उन्होंने खेला बैट्समैन ने। ही डिडंट गो फॉर एनी एक्स्ट्रा शॉट, एनी पावरफुल शॉट, ही प्लेड विद द स्ट्रेट बैट। अदरवाइज वो आराम से शायद विकेट की तरफ बॉल निकल सकती थी। प्लेड रियली गुड, स्ट्रेट बैट के साथ 1 रन मिलेगा। बहुत ही अच्छी बॉलिंग करवा रहे हैं, बहुत अच्छी बॉल। एक दफ़ा टूवर्ड्स मिड विकेट की तरफ खेला उन्होंने, मिडल और लेग की तरफ बॉल थी और उन्होंने स्विंग किया, अनएबल टू कनेक्ट द बॉल और फील्डर वहाँ मौजूद और सिर्फ 1 ही रन बनेगा। इस वक्त हमारे पास मल्टी व्यू है कैमराज में, सब एक्सीडेंट फैसिलिटी ICCMC। और बहुत अच्छी बॉल खेल, अच्छा ऑफ की तरफ बॉल थी। एक दफ़ा फिर स्ट्रेट बैट से खेला और 1 ही रन मिलेगा। और ये शाहिद कंटिन्यू करेंगे। 3 रन दिए हैं अब तक इस ओवर में और बहुत ही अच्छी बॉल, कीपर से मिस हुई, बाय का रन मिलेगा बट वाज रियली गुड बॉल, बॉल वाज स्विंगिंग इन और बहुत ही अच्छे एक्शन भी बॉल करा रहे हैं। ही हैज़ अ गुड डिसेंट हाइट और अच्छी बात यह है कि बॉल इज स्विंगिंग विद द टेप, विच इज प्रीटी गुड। दैट टेल्स कि बहुत अच्छा पेस और अच्छी जो बॉल पोजीशनिंग है उनकी वो बहुत अच्छी है। बॉल स्विंग करने में कामयाब हो रहे हैं शाहिद। और इस तरह सेकंड ओवर ख़त्म होता है। इसको 15 रिकॉर्ड रन रेट is moved up a bit, not much I would say. To start with the score, required run rate was 9.1 and now moved up to 9.5. 8 more overs remaining and they still need 76 runs. थंडरबोल्ट्स ने अभी तक कोई विकेट लूज नहीं की है। So
डिसेंट स्टार्ट। अभी 7.5 की जो है वो रन रेट से खेल रहे हैं, और गुड थिंग इज़ कि उन्होंने विकेट लूज़ नहीं किए हैं। और इस तरह जो है चेंज ऑफ बॉलिंग, सलमान आए हैं बॉलिंग करने। लेफ्ट आर्म से बॉल करते हैं, बहुत अच्छी बॉल की है उन्होंने, और लेकिन थोड़ा लेग की तरफ मिस हुई बैट्समैन से, और एक्स्ट्रा रन मिलेगा थंडरबोल्ट्स को। क्वाइट स्टार्ट बाय थंडरबोल्ट्स, बट गुड थिंग इज दे हैवंट लॉस्ट एनी विकेट्स। अपना एंड चेंज किया, फिर राउंड द विकेट से अब ये ओवर द विकेट आ रहे हैं। लेफ्ट आर्म बॉलर हैं, और बहुत अच्छी बॉल, थोड़ा सा पेस चेंज किया, ऐसा मुझे महसूस हुआ कि उन्होंने चेंज किया, और बैट्समैन जस्ट वेंट फॉर इट एंड डिसीव्ड बाय द चेंज ऑफ पेस, एंड नो रन वर स्कोर्ड। The score is 16. The third over is in progress. सलमान बॉल कर रहे हैं, इनका पहला ओवर है। रिक्वायर्ड रन रेट जो है वो 9.57 है। It's gonna be a good finish of the game, मुझे ये सेंस आ रहा है। और एक शॉट खेला towards the over the head of the extra cover, और इस तरह ये बाउंड्री मिलेगी। फुल टॉस बनाने में कामयाब हुए बैट्समैन। अगेन जहाँ बॉल की डायरेक्शन थी उसी तरफ खेला। He didn't play cross, and able to connect the ball well from the middle of the bat, went over the head of the extra cover fielder for 4 runs. अच्छी बॉल आई थिंक वो फुल टॉस हो गई थी, बट और बैट्समैन ने अच्छा खेला, और बॉल ही अच्छी बॉल, वेरी नाइस इन स्विंगिंग बॉल, एक्सीलेंट लेंथ, एक्सीलेंट लाइन, और बोल्ड हो गए बैट्समैन बिल्कुल ही। परफेक्ट इन स्विंग यॉर्कर, आई वुड से perfectly balled, I would say one of the best ball you can watch in a tape ball. It started from off and came into the middle, और length इतनी थी कि बैट्समैन couldn't get underneath the ball, और इस तरह जो है वो पहली विकेट जो है वो थंडरबोल्ट्स ने लूज की। स्कोर इज 20, रिक्वायर्ड रन रेट है स्टिल 9.47, स्टिल मैनेजेबल। एनीथिंग ओवर 13 और 14 जो है वो रिक्वायर्ड रन रेट अगर जाती है तो यू आर अंडर प्रेशर। 9 तक रखें, अंडर कंट्रोल रखें, तो दे कैन, देयर स्टिल लॉन्ग वे टू गो, स्टिल जस्ट अ थर्ड ओवर ऑफ द गेम। बट बहुत ही अच्छी बॉलिंग, जो अभी तक दूसरी, इससे पहले जो बॉलर थे उन्होंने भी बहुत अच्छी इन स्विंग बॉल की, और ये सलमान की ये बॉल थी बस आई थिंक ऑलमोस्ट अनप्लेएबल, केम फ्रॉम ऑफ टू द मिडल एंड लेंथ वाज परफेक्ट, बैट्समैन मिस द बॉल। सलमान कंटिन्यू करेंगे ओवर द स्टंप, और स्लो बॉल की, पुल किया, और बैट्स थोड़ा दूर था फील्डर से, इट वेंट टूवर्ड्स द फाइन लेग रीजन। बॉल स्लो थी, शॉर्ट थी, बैट्समैन जो है वो सही तरह टाइम नहीं कर सके, और टॉप पेज लग के बॉल ऊपर गई, बट लैंडेड सेफ, कोई डैमेज नहीं हुआ थंडरबोल्ट्स को, बट कोई डैमेज अफगान टाइगर्स को भी नहीं हुआ। और अपनी सोच में he wanted to do something different, couldn't make up his mind, and made a right call not to deliver. ये बहुत अच्छा है बॉलर के लिए, अगर वो डबल माइंड हो रहे हैं कहाँ बॉल करें कहाँ ना करें, rather than giving an extra ball with no purpose, better to go back to your run up. और ये उठाया है, फील्डर नीचे आ रहे हैं, और ये कामयाब नहीं हो सके, मिड विकेट की तरफ शॉट खेला। अगेन इट वाज अ टॉप एज, बॉल वाज नॉट देयर टू हिट टुवर्ड्स द मिड विकेट, एंड ही स्टिल, बैट्समैन स्टिल ट्राई टू हिट इट, और टॉप एज लगा, फील्डर पहुंचे बॉल तक लेकिन कैच करने में कामयाब नहीं हुए। So I'm not sure how big that drop would be for one Tigers, but ऐसे chances जो है आपको लेने ज़रूरी हैं। आप ऐसे chances लेंगे तो definitely game में जो है वो pressure build होता है। Now he's changing his side, coming round the wicket, और इस वक्त जो है मोहम्मद
फेस कर रहे हैं. स्लो बॉल बट वेंट टुवर्ड्स द लेग साइड. ही वाज एबल टू पिक इट अप, प्ले टुवर्ड्स द फाइन लेग फॉर 4 रन. कीपर की तरफ से इशारा के व्हाट वाज दैट. आपको ज़रूरत क्या है इस तरह की लाइन पे बॉल करने की व्हेन यू कैन डू अ बेटर बॉल द वे यू गॉट द विकेट. एंड आई थिंक आई वुड एग्री विद द कीपर. इस बॉल का जो है वो पर्पस मुझे समझ में नहीं आया, बट स्टिल bowler always thinks about, he wants to get a wicket. A batsman was really up to the mark, able to pick, the ball was slow but able to pick it up properly and play towards the fine leg and got 4 runs for his team. Score जो है वो 26 हो चुका है. मुझे लग रहा है it will be a close finish. Required run rate जो है वो 9.29, just moved towards the downward a bit, but इतना कोई डैमेज अभी तक नहीं कर पाए हैं थंडरबोल्ट्स के प्लेयर्स. लेट्स सी कि क्या होता है. अच्छा मैच देखने में आएगा ये. और इस वक्त जो है कंटिन्यू करेंगे शेर ज़मान. Way towards the leg side, no way batsman could connect it. Even he tried, way towards the leg side और एक extra run मिलेगा. Again आपको जो है this is a critical moment in the game, right? आपको first ball set up the tone. अच्छा shot खेला towards the mid wicket and now they're going for the second run and they're easily able to make it. Or I would say it's a short arm jab. He didn't swing the bat properly, but able to connect the ball. Ball went towards the deep mid wicket और इस तरह 2 रन लेने में कामयाब. और एक और लेग की तरफ बॉल थी. I think it was there to hit, but batsman couldn't connect. और वो डॉट बॉल मिलेगी. जस्ट अ रिमाइंडर, देयर इज नो लेग बाय इन दिस टूर्नामेंट, सो लेग बाय इज अ डॉट बॉल. शेर ज़मान कंटिन्यू करेंगे. ऑफ की तरफ से अच्छा शॉट खेला उन्होंने. टूवर्ड्स अच्छा शॉट खेला और इस तरह जो है वो एक ही रन बनेगा. और अच्छा पिक किया. ऑफ की तरफ बॉल थी, टूवर्ड द मिड विकेट खेला और लॉन्ग ऑन की तरफ जो है वो कैच लेने में कामयाब. इस तरह जो विकेट लूज की है, सेकंड विकेट लूज की है थंडरबोल्ट्स ने. बॉल के अंदर वो पहुंचने में कामयाब हो गए थे, लेकिन जो है वो सही तरह कनेक्ट नहीं कर पाए और बॉल ने ट्रैवल नहीं किया और सीधा फील्डर के पास, जिन्होंने अच्छा कैच लिया. शेर ज़मान कंटिन्यू करेंगे. 3 बॉलें अब तक वो करा चुके हैं. अभी 4th बॉल पे विकेट मिली थी उनको. अच्छी बॉल की और 4 रन मिलेंगे. लेग की तरफ बॉल थी और इस तरह पुल किया और 4 रन मिलेंगे अब थंडरबोल्ट्स को. स्कोरिंग थोड़ी सी रुकी है और अब शायद इन्होंने कंटिन्यू किया है. और बहुत अच्छी बॉल. इस दफ़ा लेंथ उन्होंने करेक्ट की और लाइन भी थोड़ा करेक्ट की इन्होंने, क्योंकि पहली वाली बॉल थोड़ा लेग की तरफ थी और जो एक बाउंड्री बनी
और इस वाली बॉल पे अच्छी मिडल की तरफ और लेंथ थोड़ी बॉल को आगे रखा इन्होंने और डॉट बॉल मिलेगी। स्कोर जो है वो 35 हो चुका है। 4 ओवर्स का गेम हो चुका है। दे स्टिल नीड 56 रन्स इन 6 ओवर्स। जैसे मैंने कहा, it's going to be a close finish of this game. Required run rate is still manageable, around the same at what was the beginning of the inning. शाहिद कंटिन्यू करेंगे। पहले ओवर में इन्होंने सिर्फ 4 रन दिए थे और गुड स्विंगिंग बॉल, बहुत अच्छी स्विंग करते हैं बॉल को। इसको जो है विकेट गिरेंगी तो प्रेशर बिल्ड होगा थंडरबोल्ट पे। तो गेम इज प्रीटी इवन एट दिस स्टेज। और बहुत अच्छी डिलीवरी थी। लेग की तरफ खेलना चाहते थे लेकिन कनेक्ट नहीं कर पाए और डॉट बॉल। अब जो है डॉट बॉल के साथ रिक्वायर्ड रन रेट जो है थोड़ी सी मूव हुई है अप और 9.6 पे आ चुकी है, बट स्टिल अदर से स्टिल मैनेजेबल, स्टिल अंडर 10। बहुत ही डिसेंट लाइन का जो बॉल करने का लेंथ बहुत अच्छी है, बहुत अच्छी लेंथ पे बॉल कर रहे हैं। शायद मुश्किल हो रही है बैट्समैन को बॉल के अंदर जाने के लिए, बिकॉज इफ़ यू वांट टू हिट अ बॉल यू नो मेक श्योर यू गो अंडर द बॉल टू हिट इट हाई। और लेंथ ऐसी मिल रही है जो कि बैट्समैन को मुश्किल हो रही है बॉल के अंदर जाने में। डिस्कशन फील्डर का, फील्ड प्लेसमेंट के लिए। फील्डर इज नॉट हैप्पी कि व्हाई वी मूविंग। और एंड चेंज किया शाहिद ने, अब ओवर द विकेट आ रहे हैं और बहुत अच्छी डिलीवरी, बेहतरीन बॉल और इस तरह कॉट बिहाइंड, एक्सीलेंट लाइन। उनका जो बॉल कराने का जो रनअप है और जो बॉल कराने का एक्शन है, वेरी नाइस, वेरी वेरी नाइस। थोड़ा सा डिफरेंट है लेकिन बहुत ही लुक्स प्रीटी नाइस। और स्विंग इस दफ़ा भी काफ़ी स्विंग की इन्होंने। बैट्समैन जो है वेंट टूवर्ड्स लेग साइड। बॉल जो है वो ऑफ पे ज़्यादा थी। अगर वो स्ट्रेट बैट से खेलते तो शायद ये अच्छा खेल पाते, बट अगेन बहुत ही अच्छी बॉलिंग शाहिद की। ये जो है इन्होंने अच्छा प्रेशर ऐड किया अफगान टाइगर्स की तरफ से। और देखिए आप क्या करते हैं आगे। नए बैट्समैन रिक्वायर्ड रन रेट जो है वो 10 हो चुकी है, रिक्वायर्ड एग्जैक्टली 10। फर्स्ट टाइम जो है वो पूरे गेम में जो है वो 2 डिजिट तक आई है। अच्छा खेला, ऑफ पे बॉल थी, अच्छा खेला टूवर्ड्स द फाइन लेग। अच्छा थ्रो, डायरेक्ट थ्रो, बट बैट्समैन वाज एबल टू मेक टू हिज ग्राउंड। तो उस तरह वो जो है 1 रन बनेगा। अच्छा डिसेंट बॉल जहाँ पे थी उसी तरह खेली और इस तरह जो है वो 1 रन बनने में कामयाब। मोहसिन आए हैं नए बैट्समैन। शाहिद जो है वो बहुत ही अच्छी बॉलिंग कर रहे हैं। और जो है ना इस वक्त फ्लड लाइट्स आर टेकिंग फुल इफेक्ट। सन इज अबाउट टू गो डाउन। अगेन इट्स अ ब्यूटीफुल फैसिलिटी और इट्स अ प्रोफेशनली इंस्टॉल्ड फ्लड लाइट। Probably very few location in US itself, and of course the first one in Houston.
और अच्छी बॉल, लेकिन थोड़ा पुश ज़्यादा किया बॉल को और बॉल जो है वो लेग की तरफ गई. अगेन दिस इज़ अ लेफ्ट हैंड बैट्समैन. थोड़ा सा राइट हैंड और लेफ्ट हैंड कॉम्बिनेशन होता है तो बॉलर को थोड़ा समटाइम एडजस्ट करना पड़ता है. और अगेन रन अप उनका है, ब्यूटीफुल रन अप और अच्छी बॉल की, लेकिन फुल टॉस पिक करने में कामयाब और ये कैच छोड़ दिया. आई मीन स्ट्रेट टू द फील्डर टूवर्ड्स द फाइन लेग रीजन. फील्डर ने अच्छा ग्राउंड मेक किया, केम राइट अंडर द बॉल बट ही कुडंट गेट होल्ड ऑफ इट. इस तरह ये कैच ड्रॉप हो गया. आई थिंक ये कैच प्रॉब्ली अ वेरी क्रिटिकल कैच. अगर वो इस वक्त एक और विकेट लूज करते थंडरबोल्ट तो वो आई एम श्योर थोड़ा और प्रेशर में आ जाते. और इस तरह जो है ये चांस मिस हुआ अफगान टाइगर्स के लिए. लेट्स सी हाउ एक्सपेंसिव दैट चांस वुड बी. शाहिद कंटिन्यू करेंगे ब्यूटीफुल रनअप के साथ. ओह दैट्स अ गुड थिंकिंग. अगेन he wasn't sure where to line, or maybe he lost his footing and made a right decision to not to deliver. There's no need to deliver if you're not really sure where to ball, which side to, which line or length to ball. It's a good call by the bowler. Oh, बहुत ही अच्छी delivery, excellent delivery. बहुत ही Yorker length of I think it's like 6 or 7 stump पे बॉल थी और लेंथ वॉज परफेक्ट और बैट्समैन को नहीं कनेक्ट कर पाए यॉर्कर लेंथ. और इस तरह एक और डॉट बॉल के साथ ये ओवर ख़त्म होता है. 5वां ओवर ख़त्म हुआ. स्कोर जो है वो 39 हो गया है. There's a break, seems like. बहुत ही इंटरेस्टिंग गेम जैसे मुझे लग रहा था शुरू में. जिस तरह से अफगान टाइगर्स ने पहले बैटिंग की और जिस तरह बॉलिंग की थी थंडरबोल्ट्स ने अफगान टाइगर्स को प्रेशर में रखा काफ़ी इनकी इनिंग में. डिडंट लेट देम गेट अवे बट स्टिल अफगान टाइगर मैनेज टू स्कोर 90 रन्स. और इस तरह जो है खेल जारी है. 5 ओवर हो चुके हैं, 39 रन्स बनाए हैं. दे लॉस्ट 3 विकेट्स. रिक्वायर्ड रन रेट हैज़ गॉन अप टू 10.4. सो अभी थोड़ा सा जो है वो प्रेशर डेवलप होना शुरू होगा. नाउ एवरी डॉट बॉल विल हर्ट थंडरबोल्ट्स. एक्सीलेंट व्यू आप देख सकते हैं फील्ड का. It is from the camera right on the side screen. We have multiple camera operating in the field right now. Some adjustment to the field. Continue करेंगे. शाहिद बहुत पहला ओवर भी उन्होंने शेयर्स और बहुत अच्छी बॉल वही 3 बॉल कराई इन्होंने. पुल करना मिडिल में बॉल थी, मिडिल में बॉल थी और वो पुल करने गए. आई थिंक बॉल लेंथ वाज नॉट देयर टू पुल, मिस्ड इट. और उनको जो है एक और डॉट बॉल आई. एवरी डॉट बॉल विल इंक्रीज द रिकॉर्ड रन रेट. नाउ इज 10.76, ऑलमोस्ट टचिंग 11. और एक और बॉल लेग की तरफ. आई थिंक बैट्समैन जो है ही इज नॉट कीपिंग हिज बैलेंस. अगेन इट्स अ टेप बॉल बट इट डजंट मीन यू गो out of balance and try to hit the ball. Now it seems like there are some changes in the field, in the batsman. It seems like is retiring. और अच्छी बॉलिंग कर रहे हैं इस वक्त जो है शेर जमान. और आई थिंक जो पहली बॉल जो मिस हुई थी वो उससे जो है उनको कुछ आउट हुआ उनका बैलेंस. शेर जमान विल कंटिन्यू. और बहुत अच्छी डिलीवरी ऑन की ऑफ की तरफ था. उन्होंने अच्छा खेला बैट्समैन ने. सिर्फ एक ही रन बनेगा. नाउ दे नीड टू स्टार्ट हिट ऑलमोस्ट अ बाउंड्री एवरी ओवर. रिक्वायर्ड रन रेट हैज
jump to 11.33 as I mentioned in the beginning of the over. Every dot ball will increase the required run rate. अभी जो है वो 11.33 हो गया है और बॉल अच्छी डिलीवरी अगेन लाइन और लेंथ बहुत परफेक्ट है और दे स्टिल मैनेज टू स्विंग द बॉल. अगर आप इसको कैच कर सकते हैं कैमरा में तो यू कैन सी द बॉल इज स्विंगिंग अ बिट, जो कि अच्छी मुश्किल होती है बैट्समैन को अपनी शॉट को टारगेट करने के लिए. और ये स्लो बॉल टेम्प्ट किया बैट्समैन को कि वो बड़ा शॉट खेलें, नहीं कनेक्ट कर पाए और बहुत ही इंटेलिजेंट बॉलिंग शेरजमान की और सिर्फ 1 रन बनने का. और इस तरह जो है 5 बॉलों में सिर्फ 3 रन दिए और इस दफा कनेक्ट करने में कामयाब और 6 रन मिलेंगे. बहुत अच्छी बॉल कर रहे थे. दूसरी तरफ बैट्समैन ने इस दफा बॉल की लेंथ को रीड किया, लाइन को रीड किया और वेट करने के बाद अच्छा कनेक्ट कर पाए और इस तरह ये 6 रन. वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टाइमिंग, मच नीडेड बाउंड्री फॉर थंडरबोल्ट्स. इस तरह रिक्वायर्ड रन रेट हैज मूव डाउन अ बिट to 10.75. इस वक्त जो है वो प्लानिंग इन प्रोग्रेस है, हु विल डू द नेक्स्ट ओवर. बहुत अच्छा ओवर कराया लगता है ज़ेबी हिमसेल्फ और ही वाज कीपिंग इफ आई नॉट मिस्टेकन. तो वो आए हैं बॉलिंग करने. रिक्वायर्ड रन रेट है 10.75, 43 रन चाहिए लास्ट 4 ओवर्स में और इस तरह जो है बहुत अच्छा. सीम्स गाइस गोइंग फॉर अ गुड फिनिश. ये अफगान टाइगर्स का 3rd गेम है. दे वन देयर फर्स्ट 2 games. दे प्लेड 2 games लास्ट नाइट एंड they were able to win both the games. और अच्छी स्लो बॉल थी, ऊपर गई, फील्डर नीचे आ रहे हैं मिड विकेट की तरफ और बहुत ही अच्छा कैच पकड़ा. इट टुक हिज टाइम और बहुत अच्छा कैच पकड़ने में कामयाब. आई थिंक दैट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट एंड क्रिटिकल टाइमिंग ऑफ द विकेट फॉर अफगान टाइगर्स. और इस तरह अफगान टाइगर्स ने 5वीं विकेट लेने में कामयाब हुए हैं. ताहा आए हैं, बॉल 4 विकेट इनकी गुजर गए, एक रिटायर हुए थे. तो बहुत ही अच्छा फॉर द रियली गुड बॉल बाय ज़ेबी. आई थिंक ज़ेबी जो है वो अपनी बैटिंग में भी बहुत अच्छा उन्होंने परफॉर्म किया और पहली ही बॉल पे विकेट भी मिली है. बॉल में इतना पेस नहीं था. आई थिंक ही वेंट फॉर इट एंड ही गॉट द टॉप एज. बॉल स्टिल ट्रैवल्ड, मैनेज टू गेट टू ऑलमोस्ट टुवर्ड्स द बाउंड्री, बट अच्छी फील्डिंग की सलमान ने और इस तरह ये विकेट लेने में कामयाब. ऑफ पे अच्छी बॉल, ऑफ पे नॉट टू पेस नहीं था बट 1 रन लेने में कामयाब होंगे. और इस रिक्वायर्ड रन रेट अगेन वेंट टुवर्ड्स 11.45, almost 11 and a half. They need some boundaries for sure, Thunderbolts. और बहुत अच्छी डिलीवरी ऑफ की तरफ से पुल करना चाहते थे बट आई एम नॉट श्योर इट वाज देयर टू पुल. और इस तरह बॉल मिस हुई और एक और डॉट बॉल मिलेगी. अच्छी बॉलिंग करा रहे हैं अभी. अभी तक उन्होंने 3 बॉलें की हैं, 1 ही रन दिया है, सिर्फ एक विकेट भी दे चुके हैं. और बहुत ही अच्छा ऑफ पिक खेला लेकिन फील्डर वहां मौजूद थे और उन्होंने बहुत ही अच्छा कैच लिया और एक और विकेट थंडरबोल्ट्स की गिर गई है. बहुत ही अच्छी बॉलिंग ज़ेबी की इस ओवर में, 2 विकेट ली और रिक्वायर्ड रन रेट हैज़ मूव्ड अप टू 12.6, टचिंग ऑलमोस्ट 13. नाउ दे मस्ट बी फीलिंग सम प्रेशर क्योंकि 49 रन्स हुए हैं. दे स्टिल नीड 42 रन्स इन 3.2 ओवर्स. क्या होगा अब. अच्छा थंडरबोल्ट्स ने अच्छी बॉलिंग में बहुत अच्छी की लेकिन वैसे मैंने बोला वन टाइगर्स हैज अ डिसेंट बॉलिंग लाइनअप, स्पेशली 2 बॉलर्स आई हैव सीन would swing the ball
और बहुत ही अच्छी लेंथ के साथ और लाइन के साथ बॉलिंग कर रहे थे और बहुत अच्छी बॉलिंग की है अफगान टाइगर्स ने अब तक और दे हैव केप्ट थंडरबोल्ट्स अंडर प्रेशर। प्रेशर बिल्ड होता जा रहा है, quite dug out from Thunderbolts. Again they drove all the way from Dallas. उनको Dallas से वेलकम करते हैं। I'm sure they're enjoying the facility, beautiful facility, one of a kind in Houston with professionally installed floodlights. और शॉर्ट बॉल थी, ऑन साइड तरफ खेला। Again कनेक्ट नहीं कर पा रहे हैं बॉल को जिस तरह वो चाह रहे हैं और बहुत अच्छा ओवर। आई थिंक शायद एक बॉल भी, वन मोर बॉल टू गो। इस ओवर की जेबी ने बहुत अच्छी बॉलिंग कराई, 2 विकेट ले चुके हैं और सिर्फ 2 रन लिए। सम डिस्कशन, चेकिंग। Amir Siddiqui, man behind US Tapeball cricket himself, available on the field. और आप देखें सिर्फ व्यू में आप देख सकते हैं, there's a trailer going behind our field, beautiful facility. So one of a kind, professionally installed floodlights. Floodlights has taken full effect now. You can see it's very clear. अच्छा शॉट खेला ऑफ की तरफ और ये शायद ऑफ की बॉल थी और ऑफ ही की तरफ खेला बॉल की मेरिट पे। थिंक दे वेटिंग फॉर द कॉल, इज इट 4 और 6 और अंपायर ने 4 का इशारा किया है। मच नीडेड बाउंड्री, रिक्वायर्ड रन रेट है 11.67 हो चुकी है। देखिए अब क्या करेंगे आगे। इस वक्त 3 ओवर का गेम बाकी है, 35 रन मौजूद हैं। हमारे साथ एक हमारे नन्हे मेहमान यहाँ मौजूद है। आई थिंक ही इज लर्निंग क्रिकेट एंड स्टिल ट्राइंग टू अंडरस्टैंड व्हाट इज गोइंग ऑन। सो बहुत ही एक्सीलेंट वेदर टू प्ले क्रिकेट। ह्यूस्टन में स्प्रिंग का आगाज है ऑलमोस्ट और वी आर लुकिंग फॉर अ ब्यूटीफुल वेदर फॉर नेक्स्ट कप, एटलीस्ट फॉर month or so before we go into extreme heat of July. I hope you're enjoying the coverage of Texas Cup. Our short ball thi, wanted to pull the ball but couldn't connect, got the outside edge and Thunderbolt lost their 6th wicket. Now they're under pressure. The required run rate has gone up to 13.06. They still need 37 runs and 3 more overs to go. The game was looking very promising in the beginning. Thunderbolts started pretty well, but it seems they have lost the way. They have lost 6 wickets already. The required run rate is moved up to 13.06. They need 37 runs and they have 4 more wickets. Sunny will continue. This will be his second over. पहले over में he gave 11 runs and got 1 wicket. बहुत अच्छी ball towards the offside. Connect करना चाहते थे लेकिन missed the ball. 1 more dot ball. Every dot ball will increase the required run rate. Now it's almost touching 14. 13.88 is the required run rate. Play towards the mid wicket, लेकिन सिर्फ एक ही रन मिलेगा. Singles won't hurt Afghan Tigers. ये let's see कि 13 इनको 36 चाहिए 2.3 ओवर्स में.
और अगेन पुल का शॉर्ट बॉल भी नहीं थी, लेकिन ही स्टिल वेंट फॉर अ पुल और couldn't connect at all. टेप बॉल में भी चाहिए, यू हैव टू प्ले अकॉर्डिंग टू द मेरिट ऑफ द बॉल. यू जस्ट कैन नॉट स्विंग द बैट ऑन एवरी बॉल. और इस तरह सिर्फ एक ही रन मिलेगा. इस वक्त रनी अपने 2 बॉलें बाकी इस ओवर की और बोल्ड कर दिया. बहुत ज़्यादा शफल किया और बॉल के लाइन में बिल्कुल नहीं आए. नॉट श्योर वेयर ही वांटेड टू प्ले और कंप्लीटली मिस द लाइन ऑफ द बॉल. और इस तरह थंडरबोल्ट्स ने अपनी 7th विकेट लूज की है. रिक्वायर्ड रन रेट इज 16.15. They have lost the way completely. In the beginning it was looking like a very close match, but Thunderbolts came one Tigers came very strong. जो required run rate है इस वक्त 16.15. They still need 3 more. क्या वहाँ पे फैल्कन्स और आरएस स्पोर्ट्स का गेम है. कहाँ पे? फैल्कन्स फील्ड 2 पे. फैल्कन्स हो? आरएस स्पोर्ट्स अगर कुछ टीम से आरएस वो आरएस या एमजी स्पोर्ट्स? आरएस स्पोर्ट्स लिखा हुआ है. आरएस पेस्ट कंट्रोल पर ये लिखा हुआ है. आरएस स्पोर्ट्स फील्ड 1 पे तो चार्जर थंडरबोल्ट पे है. उनके तीनों मैच उधर हो So जाएंगे. some discussion going on right now. The Thunderbolts need 35 runs. Required run rate is 7.5. They only have 2 more wickets remaining. I think it was a good game, but Thunderbolts completely lost the way. They're out of their range. One Tigers ने अपनी the 3rd game है. They've won the first 2 games. बहुत ही अच्छी बॉलिंग भी है उनकी. Not only they have a good batting side, they also have a good bowling line. Seems like there's some issue with the scoring. ये तो ब्लॉग स्टार्ट है ना, तो 5 मिनट और वेट करना. So required run rate is 19.09. This game is almost over. They only have 2 more wickets remaining. 35 चाहिए अभी भी. बहुत ही मुश्किल लग रहा है. They lost away completely. One Tigers they have अपना 3rd game. They're almost close to winning the 3rd one also. They have very decent bowling line. और इस तरह एक टॉप एज लगा और कीपर ने आराम से कैच लेने में कामयाब. और इस तरह they lost their 9th wicket. और Thunderbolts अपनी 9th wicket नुकसान करने के बाद they still need 35 runs. Required run rate is 21. So for them it's almost over. और इस तरह one Tigers will qualify for the semi-finals. हमारे साथ इस वक्त ह्यूस्टन के बहुत ही मशहूर प्लेयर
अब्दुल रहीम खान मौजूद है, वेरी वेल नोन ह्यूस्टन क्रिकेट लीग में जो है वो काफ़ी बड़ा नाम है इनका, और यहाँ पे वो चार्जर्स से खेल रहे हैं, लकी चार्जर्स। रहीम साहब कुछ कहेंगे आप मैच के बारे में? बहुत अच्छा टूर्नामेंट हो रहा है. I think you guys have done an excellent job. Tournament like this is something really huge in Houston. Houston के जितना भी टेबल का टैलेंट है, they all are playing here. बड़ी अच्छी क्रिकेट हो रही है. It's a beautiful facility here at East Ground. 2 fields हैं, floodlights में क्रिकेट हो रही है. So it's a really really good opportunity for all the Houston players to come and show their skills in table cricket. I've been lucky to play with Adil Anis for a long time. We have been playing for the last 7-8 years, and he himself is a wonderful player, one of the best wicket keepers in Houston. And every season he's one of the leading wicket keeper in top division here in Houston. So Adil himself is a very very good cricketer. So it's an honor to be present here in the commentary box with Adil Anis. क्रिकेट की बात करते हैं तो Afghan Tigers seems to be through to the semi-final, and the next game in this group will be between Thunderbolts and Chargers, and that game will decide who's the second semi-finalist from this group. And remember, semi-finals will be played tomorrow at 6 o'clock, and the final will be played here at 8 o'clock. So some exciting cricket coming up in the next couple of days here. Thank you, ARK, Abdul Rahim Khan, known as ARK also. As I said, very well-known player in Houston. He's playing for Chargers, so the next game you will see him live in action also. I'm looking forward to see his big hits and excellent bowlings. I'm lucky enough to play alongside with Abdul Rahim Khan as well on the same team, but of course he's a much bigger player than I would say. But yeah, exciting cricket going on, as Abdul Rahim rightly said. A beautiful facility. This particular game, I think, is almost over. The required run rate has gone to 28.29. Thunderbolts are visiting us from Dallas. I think they came with a high expectation, and they are getting a good quality of cricket in Houston itself. So beautiful facility, ICC, MC. We have a big LED screen as well, so you're going to see that on the semi-final and final. You want to take 2 runs, and bad call from the lone striker, and now they lost their last wicket. He called him, then he stayed back. Sounds like a similar dismissal. Now that wraps up the inning of Thunderbolts. They lost with 30 runs, and Afghan Tigers has won their 3rd game and have qualified for the semi-finals. The next game will be between Thunderbolts and Chargers. Chargers is also one of the good team in Houston. They lost their first game to Afghan Tigers last night I would say. Now they're looking forward to come back strong and win this upcoming game. So stay tuned for upcoming game between Houston Chargers and Thunderbolts. It's going to be exciting games. Talk to you soon, guys.
जी वेलकम टू सेकंड गेम ऑफ टुनाइट. अभी Thunderbolt versus Chargers. Thunderbolts are batting first. Abdul Rahim Khan is bowling. He was with us in the studio some time back. Again, he's a very well-known player as well in Houston. Off a ball थी. Important game between Thunderbolts and Chargers. Chargers ने अपना गेम पहला गेम जो है वो लूज किया था. Last night they played, they lost to 1 Tigers, and Thunderbolts also lost to 1 Tigers just now. So important game for both the teams. Shakila towards the toward the fine leg, 2 run मिलेंगे. Good running between the wicket. So if you have just tuned in, this is the second game for tonight. It's between Chargers and Thunderbolts. इम्पॉर्टेंट गेम है दोनों टीम्स के लिए. चार्जर्स के में काफ़ी बड़े प्लेयर्स खेल रहे हैं ह्यूस्टन के. अब्दुल रहीम खान इज़ वन ऑफ द फेमस प्लेयर ऑफ ह्यूस्टन. इसके अलावा बहुत सारे अल्ताफ़ खान खेल रहे हैं जो भी बॉलिंग करने भी आ रहे हैं. उसके बाद इनाम खान, रॉनी हिमसेल्फ वेरी फेमस हिटर ऑफ अ क्रिकेट बॉल दैट इंक्लूड्स बोथ टेप बॉल एंड हार्ड बॉल, वो भी खेल रहे हैं. तो इस वक्त कीपिंग कर रहे हैं वो. और अल्ताफ़ जो है वो ह्यूस्टन ईगल्स से हार्ड बॉल भी खेलते हैं. वेरी गुड बॉलर, लेफ्ट आर्म से बॉल करते हैं. तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट गेम. स्टे ट्यून्ड, इट्स गोइंग टू बी वेरी एक्साइटिंग गेम बिटवीन चार्जर्स एंड थंडरबोल्ट. थंडरबोल्ट हैज़ लॉस्ट देयर फर्स्ट गेम अगेंस्ट 1 टाइगर्स. अल्ताफ़ आए लेग पे, अच्छी बॉल कराई, अच्छी बॉल थी और कोई रन नहीं मिलेगा. डॉट बॉल कराई. 7 रन बना चुके हैं थंडरबोल्ट्स अब तक और उनका जो है सेकेंड ओवर गेम जारी है. थंडरबोल्ट्स, जस्ट अ रिमाइंडर, दे आर विजिटिंग अस फ्रॉम डैलस. वेलकम देम हियर एंड thanks them to coming and join us in this Texas Cup. अल्ताफ़ खान लेफ्ट आर्म, वेरी फेमस बॉलर. यहाँ पे काफ़ी वेल नोन प्लेयर भी हैं अल्ताफ़ खान. और बहुत ही अच्छी डिलीवरी, बहुत अच्छी स्विंग हुई और लेफ्ट आर्म से बहुत स्विंग बॉल करते हैं अल्ताफ़. और अभी आपने देखा इनकी स्विंग बॉलिंग कि काफ़ी लेग्स ऑफ से पड़ के और बाहर की तरफ बॉल निकली और बैट्समैन कनेक्ट नहीं कर पाए. और शॉट खेला जब बैट के नीचे आई और आई थिंक वेट फॉर द अंपायर सिग्नल एंड 6 रन. बॉल जो है इन्होंने स्विंग किया, अच्छा कनेक्ट कर पाए बॉल को जो है इनके आर्क में आई, सीम्स लाइक बैट्समैन के. और पहला 6 ऑफ द इनिंग फ्रॉम थंडरबोल्ट्स. बड़ा स्कोर चाहिए उनको. चार्जर्स में जैसे मैंने बोला काफ़ी बड़े प्लेयर्स मौजूद. एहसन शाह, रेहान अहमद, जीशान, अब्दुल रहीम खान, अल्ताफ़, इनाम खान, सारे दे आर गुड प्लेयर्स और काफ़ी वेल नोन है. एक और शॉर्ट बॉल कनेक्ट करने में कामयाब रहे. जीशान वहाँ मौजूद है मिड विकेट की तरफ और एक ही डीप मिड विकेट की तरफ और सिर्फ एक ही रन बना पाएंगे. तो सेकंड ओवर चल रहा है. 14 रन अब तक हो चुके हैं और वेट फॉर दिस अंपायर सिग्नल. और अंपायर ने नो बॉल नहीं की, बॉल वाज डिपिंग. और इस तरह सेकंड ओवर हो चुका है. 2 ओवर के इख्तिताम पर स्कोर जो है 14 रन, सॉरी 15 रन, करेक्शन. अच्छा ओवर कराया अल्ताफ़ ने, सिर्फ 8 ही रन दिए और लेकिन इसमें एक 6 रन भी आए थे. तो आगे देखते हैं आगे कैसा होता है. इसमें भी एक्साइटिंग गेम, वो दोनों टीम्स के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट गेम है इफ दे वांट टू हैव अ चांस टू गो टू द सेमीफाइनल्स. दिस इज द सेकंड गेम फॉर ह्यूस्टन चार्जर्स और थंडरबोल्ट्स का भी सेकंड गेम है. Sorry, this is the third game of Chargers. They won the second game. They lost the first one last night to 1 Tigers. They won the second one with GM Sports, and now they are playing against Thunderbolts. Ronnie himself, Ronald Robinson नाम है उनका पूरा. Ronnie के नाम से मशहूर है ह्यूस्टन में. Very well known player with the cricket ball that includes tape ball and hard ball. अभी recently he scored century in a hard ball game. अच्छी बॉल थी, स्विंग लेग की तरफ, कनेक्ट नहीं कर पाए और ये जो है डॉट बॉल मिलेगी. वेरी एक्सपीरियंस प्लेयर, ही इज़ वेरी वेल नोन
जहाँ पे भी कोई ह्यूस्टन का बड़ा टूर्नामेंट होता है, ये ही इज़ ऑलवेज देयर। ओह एक और अच्छी बॉल, बहुत अच्छी लाइन और बहुत अच्छी लेंथ, ज़्यादा अच्छी थी, कहीं कनेक्ट कर पाए, बॉल के नीचे नहीं जा सके और इस तरह जो है वो डॉट बॉल आ गई। एक और अच्छी बॉल और थ्रो किया कीपर ने, हिट की डायरेक्ट, लेकिन बैट्समैन ऑलरेडी पहुंच चुके थे और इस तरह 1 रन मिलेगा। अच्छा चल रहा है, आई मीन अभी तक 16 रन बनाए हैं थंडरबोल्ट्स ने। इंपॉर्टेंट गेम है, सेकंड गेम है ह्यूस्टन चार्जर्स के लिए भी। इफ दे विन दिस गेम दे हैव अ चांस टू गो टू द सेमीफाइनल्स, so it's like a pre-quarter final for और अच्छी बॉल थी, बहुत अच्छा पेस था, कीपर कलेक्ट नहीं कर पाया। आई थिंक शायद बैट का इनसाइड एज लगी और कीपर से मिस हुई बॉल और इस तरह 4 रन मिलेंगे थंडरबोल्ट्स को। तीसरा ओवर जो है इस वक्त जारी है, रॉनी बॉल कर रहे हैं। रॉनी हिमसेल्फ ग्रेट प्लेयर ऑफ ह्यूस्टन क्रिकेट, बैटिंग में भी अपने जलवे दिखाएंगे। लगता है अच्छी बॉल थी, ऑफ की तरफ अच्छा खेला उन्होंने और क्विक रनिंग बिटवीन द विकेट्स वेंट टुवर्ड्स द बैकवर्ड पॉइंट और 1 रन मिलेगा। गुड रनिंग बिटवीन द विकेट। और अच्छी डिलीवरी थी, बैट के नीचे आई, लेकिन ज़्यादा दूर नहीं मार सके। इनाम वहाँ मौजूद थे, अच्छी फील्डिंग की इनाम ने और सिर्फ 1 ही रन मिलेगा। और इस तरह ये तीसरे ओवर का गेम भी ख़त्म। स्कोर मूव अप टू 22 विद द लॉस ऑफ नो विकेट्स। जो रन रेट है इसको 7.33 है। दे नीड टू बी समवेयर अराउंड 10 to 11. Chargers has a decent batting line as well. Good hitters. All the players in Chargers can hit pretty big. So they need to score a decent run to have any chance. देखिए क्या करते हैं Thunderbolts. They joined us all the way from Dallas. We thank them to join us in this tournament. I'm sure they're enjoying this beautiful facility, ICC-MC, Isa Cricket Club and Multi-Sports Complex. और बहुत अच्छी डिलीवरी अल्ताफ ने कंटिन्यू कर रहे हैं। इस दफ़ा पेस पिक किया अल्ताफ ने पहले ओवर में, थोड़ा ही वाज प्रॉब्ली वार्मिंग अप और ही इज़ वेरी गुड बॉलर। काफ़ी अरसे से ही बीन प्लेइंग इन ह्यूस्टन एंड बीन प्लेइंग इन ऑल अराउंड द ह्यूस्टन एरिया। वेरी वेल नोन ह्यूस्टन प्लेयर अल्ताफ खान, also known as AK-47। और बॉल अच्छी रिसीव किया, स्पेस चेंज किया। बैट्समैन जो है वांटेड टू हिट बिग बट बॉल बिल्कुल सही टाइम पे डिप हुई और इस तरह वो नहीं कनेक्ट कर पाए और इस एक और डॉट बॉल, 2 बॉलें डॉट करवा चुके हैं अल्ताफ। इज एड्स द प्रेशर अगेंस्ट अ 10 ओवर्स गेम, तो एनी डॉट बॉल रियली एड्स द प्रेशर। इस दफ़ा कनेक्ट करने में कामयाब हुए हैं। देखें वहाँ कहाँ, और इस तरह या पहली विकेट लेने में कामयाब, अच्छा कनेक्ट किया था बट स्ट्रेट टू फील्डर एंड थंडरबोल्ट्स लॉस्ट देयर फर्स्ट विकेट। 2 डॉट बॉल्स के साथ हम बैट्समैन काफ़ी प्रेशर में आ गए थे। दे हैड टू हिट बिग, और हिट तो किया बिग बट वहाँ पे तो फील्डर थे और वो सीधा फील्डर ने कैच पकड़ा और आउट कर दिया। अल्ताफ की बहुत ही अच्छी बॉलिंग, दूसरा ओवर चल रहा है, 10 ओवर्स का गेम है। रन रेट जो है वो 6.29 है। दैट्स नॉट इनफ एट ऑल एज यू कैन इमेजिन। बड़े हिट चाहिए थोड़े से थंडरबोल्ट्स को रन रेट को आगे बढ़ाने के लिए। और अच्छा कनेक्ट किया इस दफ़ा, लेकिन फील्डर वहाँ मौजूद जिशान अच्छा ही केम अराउंड। एक्सीलेंट थ्रो, बहुत अच्छा थ्रो और ये रन आउट। बहुत ही एक्सीलेंट पिकअप बाय जिशान, एक्सीलेंट थ्रो,
to the keeper, good collect by the keeper and then run out. तो ये back to back 2 विकेटें गिरी हैं Thunderbolts की, जो कि is not looking too promising for Thunderbolts. Again, it's a very very important game for both the teams. Thunderbolts को ये मैच जीतना ही है और Chargers को भी जीतना है, so they can go to the semi-finals. So they lost. This is the run out. Not a good timing for the losing the wicket for Thunderbolts. ताफ खान ने अच्छी बॉलिंग की है अब तक. और अच्छी बॉल मिड विकेट तरफ खेले, आ गई जीशान, गए फील्ड करने के लिए. आई थिंक ही वांट टू टेक अ कैच बट मिस हुआ जीशान से और इस तरह ये बाउंड्री मिलेगी. मिडिल में विकेट बॉल थी, बैट्समैन ने पुल किया और कनेक्ट करने में कामयाब हुए. जीशान जो कि बहुत ही अच्छे फील्डर भी हैं, जो कि अभी रन आउट में अभी इन्होंने थ्रो से किया था जो कि आपने देखा, और इस तरह उनसे बॉल मिस हुई और 4 और बहुत अच्छी डिलीवरी. एक और कैच होने के चांसेस. अब्दुल रहीम खान नीचे आ रहे थे लेकिन शायद ड्रॉप हो गया है और ये कैच जो है ड्रॉप हुआ. करेक्शन, दैट वाज नॉट अब्दुल रहीम खान because I think probably he's a good fielder. देखिए आगे क्या होता है. अच्छा खेला था शॉट, ऊपर काफ़ी टाइम था फील्डर्स के पास बॉल को पकड़ने का, लेकिन वो पहुंच तो गए थे लेकिन वो कलेक्ट नहीं कर पाए बॉल का. चेंज ऑफ बॉलिंग. आई थिंक रेहान अहमद जो है वो बॉल करने आ रहे हैं. वेरी गुड बॉलर हिमसेल्फ. चार्जर्स के पास ह्यूस्टन के वेरी वेरी वेल नोन प्लेयर्स आर प्लेइंग. रॉनी हिमसेल्फ, अल्ताफ खान, बहुत अच्छे प्लेयर्स हैं. चार्जर्स की अगर आप टीम देखें तो काफ़ी बड़ी बड़ी उसमें ह्यूस्टन के प्लेयर्स खेल रहे हैं. खिजर रहमान, रोनल्ड रॉबिन्सन, रॉनी शहजाद, मसीह, रेहान अहमद, इनाम खान, अब्दुल रहीम खान, जीशान अहमद, सलमान राना, अल्ताफ़ खान, उस्मान अहमद एंड उस्मान फारूकी. रेहान ने पहली बॉल पे बाउंड्री मिली है और ये भी अंपायर का वेट करना पड़ेगा. शॉर्ट बॉल थी, फुल टॉस बनाने में कामयाब हुए और एक और बाउंड्री मिलेगी. नॉट अ गुड स्टार्ट बाय रेहान. ये बॉल जो है उनको काफ़ी आराम से जो है वो कामयाब हुए. बैट्समैन बॉल कनेक्ट करने के लिए अंपायर ने नो बॉल भी कॉल की है. सो इट्स गोना बी अ फ्री हिट सीम्स लाइक. So, एक बॉल में 9 runs ऑलरेडी दे चुके हैं रेहान. Probably not the start he was looking for. मोहम्मद जो खेल रहे हैं उन्हें 13 runs बना चुके हैं 4 बॉलों पे. और एक दफ़ा फ्लिक करने में कामयाब हुए. अच्छी बॉल थी, लेग की तरफ जा रही थी बट ही वाज एबल टू फ्लिक इट टुवर्ड्स द फाइन लेग और एक ही रन मिलेगा. अंपायर ने वाइड कॉल की. और स्टिल फ्री हिट. I think there was some discussion के ball hit the batsman. But umpire has the final authority. और बहुत अच्छी डिलीवरी, बहुत ही अच्छा कम बैक बाय रेहान. फ्री हिट थी लेकिन रेहान ने अच्छी लेंथ पे बॉल कराई और इस तरह से डॉट बॉल मिलेगी थंडरबोल्ट्स को. स्कोर जो है वो मूव हुआ है. अब रन रेट जो है वो 9 पे आ गया है अचानक से. 6.5 था इस ओवर से शुरू होने से पहले. तो अच्छा ओवर अब तक आया है. एक और शॉट, स्लो बॉल थी, कनेक्ट किया
अच्छा पुल किया टूवर्ड्स द डीप मिड विकेट और एक और बाउंड्री मिलेगी. वेरी आई मीन अभी तक तो काफ़ी एक्सपेंसिव ओवर रहा है रेहान का. इस ओवर में अब तक काफ़ी रन 15 रन आ चुके हैं और सिर्फ 3 बॉल हुई हैं. तो बड़ा ओवर चाहिए था थंडरबोल्ट्स को अपने गेम में वापस आने के लिए एंड दे गॉट वन. 3 more delivered in this over और एक और वाइड बॉल. आई थिंक रेहान is losing his line completely. डिसेंट बॉलर है रेहान. प्रेशर में आ जाते हैं बेस्ट बॉलर. अगर आपको पहले बॉल पे रन बन जाए तो ऑलवेज दे ट्राई टू ओवर डू समथिंग समटाइम्स एंड यू गिव मोर रन्स. और बहुत अच्छी बहुत दैट्स अ गुड लाइन एंड गुड लेंथ. अगेन बैट्समैन पुल करने के शॉट मिड पे की तरफ खेलने गए. बॉल काफ़ी ऑफ पे थी. अगर वो ऑफ पे खेलते तो शायद और रन बन सकते थे, लेकिन उन्होंने टारगेट किया मिड विकेट को जो कि कंप्लीटली मिस कर गए बॉल. और बॉल गई सीधी कीपर के पास. और एक और अच्छी बॉल थी मिडिल में और 2 रन लेंगे. अच्छी क्विक रनिंग बिटवीन द विकेट. बहुत अच्छी रनिंग और 2 रन लेने में कामयाब. 1 रन और शायद एक्स्ट्रा मिलेगा ओवर थ्रो का और इस तरह ये 3 रन बन गए. बहुत ही बड़ा ओवर हो साबित हो चुका है ये. 19 रन आ चुके हैं और अभी तक सिर्फ 1 बॉल बाकी है इस ओवर में. और एक और शॉट किया लेकिन यहाँ जब फील्डर जीशान मौजूद मिड विकेट की तरफ और 1 ही रन बनेगा. और इस तरह काफ़ी एक्सपेंसिव ओवर ख़त्म हुआ. 20 रन आए हैं इस ओवर में और रन रेट जो है वो 9.6 हो चुका है. 5 ओवर हो चुके हैं और 48 रन एंड दे हैव लॉस्ट 2 विकेट्स. दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट गेम फॉर बोथ द टीम्स. इट इज़ for Chargers like a virtual quarterfinals. If they win this game, they are going to go to semifinals. And if they lose this game, then Thunderbolts has one more attempt to go, and then it will come down to net run rate. Abdul Rahim Khan coming for his second over. On his first over, he gave 7 runs. So it was a good start of the inning by Chargers. Some field adjustment. We experienced performer Abdul Rahim Khan. I have honor to play alongside with him. He plays for Houston Eagles in Hardball League. Always a candidate for MVP for last several years. क्या करते हैं अब्दुल रहीम खान को. अभी इस ओवर में इनको काफ़ी कंटेन करना पड़ेगा क्योंकि जो लास्ट ओवर था 20 रन आ गए थे. See what he does. और शॉर्ट बॉल थी. पुल करने में कामयाब हुए लेकिन वहाँ फील्डर मौजूद. जीशान इज़ एवरीवेयर. इज़ द एक्सीलेंट फील्डर. बहुत क्विक बिटवीन. ही कवर्स अ लॉट ऑफ ग्राउंड. डिसेंट बैट्समैन एज वेल. रहीम कंटिन्यू कर रहे हैं और शॉर्ट बॉल मिली और पूरा टाइम मिल गया बैट्समैन को. He got so much time to pick the spot and he picked the right spot away from the fielder. Now 4 more runs to Thunderbolts. Score moved up to 53. Flight ball and missed by the batsman. अच्छी comeback ball कराई अब्दुल रहीम खान ने. Deceive किया बैट्समैन को. He went for a big shot but missed the line. और एक और बॉल यहाँ पे दोबारा जाएंगे और एक और चौका और फुल टॉस बनाने में कामयाब हुए हैं. लेग पे बॉल थी. फुल टॉस अच्छा कनेक्ट किया और बाउंड्री मिली और 9 रन आ चुके हैं. रन रेट हैज गॉन ओवर 10.06 to be exact. थंडरबोल्ट्स ने अच्छे स्कोर कर लिया है. लास्ट ओवर में भी 20 रन लिए थे और अब तक 9 रन ले चुके हैं. 2 more balls to go in this over.
They are coming back strong. They need to score at least 100 to have some game. Oh, अच्छी ball और इस तरह bold हो गए. Again he wanted to hit big. Abdul Rahim Khan uses all of his experience. अच्छी length पे ball की और miss कर गए ball को. I think he was not there to hit towards the leg side. Off पे खेलते, straight bat से खेलते तो ज़्यादा chance थे. लेकिन क्रॉस गए और बॉल को कम्प्लीटली मिस कर दिया और इस तरह जो है वो एक और विकेट जो है थंडरबोल्ट्स ने लूज़ किए. स्कोर ऑन द 57 एंड द लास्ट 3 विकेट्स. मोहसिन नए बैट्समैन इज वॉकिंग इन. बड़े इनको रन चाहिए, एटलीस्ट 100 के करीब आसपास होंगे कुछ गेम बड़ा बनाने के लिए. और बहुत अच्छी डिलीवरी लेग की तरफ थी और कनेक्ट नहीं कर पाए और इस तरह जो है गुड एंड ऑफ द ओवर बाय अब्दुल रहीम खान. गिव 9 runs in first 4 balls and then he got a wicket and the dot ball to finish it. So score moved up to 57 at the end of over number 6. Run rate is 9.50. We have a new bowler coming in. Let's see who the new bowler is. Oh, अच्छी बॉल कराई, बहुत अच्छी बॉल कराई. आई थिंक एज था. गुड अटेम्प्ट बाय रॉनी, लेकिन वो कामयाब नहीं हो सके कैच पकड़ने के लिए. उस्मान है बॉलर. अच्छी बॉल थी और एक और बहुत अच्छी डिलीवरी. वेरी गुड लेंथ. कोई टाइम ही नहीं मिल सका उनको कुछ करने का. बैट्समैन को अच्छे पेस के साथ और बहुत ही अच्छी लेंथ के साथ बॉल की और डॉट बॉल मिली. और खेला टूवर्ड्स लॉन्ग ऑन और कोई गुड रनिंग बिटवीन द विकेट और 2 रन लेने में कामयाब हुए. बहुत ही अच्छी रनिंग. अच्छा शॉट था. वेंट टू द स्ट्रेट टू द फील्डर और एक्सीलेंट रनिंग बिटवीन द विकेट. तो 2 रन मिलेंगे थंडरबोल्ट्स को. और फाइन लेग की तरफ खेला लेकिन वहाँ जीशान मौजूद. बहुत ही अच्छी फील्डिंग और सिर्फ 1 ही रन मिलेगा. बहुत अच्छी फील्डिंग और बहुत ही अच्छा थ्रो स्ट्रेट टू द कीपर. उस्मान कंटिन्यू करेंगे और नहीं कनेक्ट कर पाए जवाबी. डॉट बॉल. लास्ट बॉल है इस ओवर का. अच्छा ओवर कराया. सिर्फ 4 रन दिए अब तक और लेग पे और नहीं कनेक्ट कर पाए. एक्सीलेंट लाइन और लेंथ और पेस भी बहुत अच्छा है उस्मान का. और इस तरह ये आफ्टर 7th over score is 61 and they have lost 3 wickets. Run rate is 8.71. It's probably not enough, but they need to at least maintain it, get somewhere close to 90, probably around 100 to have a chance. नए बॉलर आए हैं शहजाद. 3 ओवर का खेल बाकी है इस वक्त. जस्ट अ रिमाइंडर, बहुत ही इंपॉर्टेंट गेम है बिटवीन थंडरबोल्ट्स एंड चार्जर्स. इट्स लिटरली अ वर्चुअल quarter finals, I would say, for Chargers. If they win the game, they have a good chance to go to semi-finals. Or if they lose this game, then they probably will be out because they have played 2 games, they have won 1, they lost 1. और अच्छा खेला. Straight to the shot mid on की तरफ. Fielder वहाँ मौजूद. I guess a good running between the wicket.
शहजाद कंटिन्यू करेंगे अपने सेकंड बॉल और अच्छा करेक्ट पिक किया और बहुत अच्छा fielder was able to catch the ball but he crossed the boundary line and given a 6 by the fielder. Much needed boundary for Thunderbolts. Run rate is 9.27. They need to maintain this run rate to get to about 90 or 100 to have a decent chase. Oh, excellent shot. One more time. Fielder is coming underneath it and he dropped the catch. He made all his ground to come under the ball. It wasn't that difficult, seems like, but Inam Khan dropped the catch. Let's see how much damage that will do to Chargers. Oh, swing and a miss. Off the ball, good line, good length. Wanted to go on the again towards the long on region or mid wicket region. Couldn't connect the ball and dot ball for Chargers. Required run rate is 9.13. Again, they need to at least maintain that run rate, if not over that. Good towards the play towards the mid wicket, and he will get the boundary. Good shot. Ball was right in the middle, but he connected well, and then got 4 more runs. Good over for Thunderbolts. 13 रन आए हैं इस ओवर में अब तक. Run rate जो है climbed up a bit for 9.45. अब देखें क्या करते हैं. इसके बाद जो है वो 2 ओवर बाकी हैं. Again, they need to stay somewhere close to 100. Moved away and then 6 runs. Moved away towards the leg side. Bowler followed the batsman and then good swing by the batsman. Connected well. Went straight over the head of deep mid-wicket fielder for a 6 run. 19 runs came off the last over. Score is now 80. Keep in mind, Chargers were not able to score 83 runs against Ahwan Tigers last night. Maybe 2 over baki hain. Ronnie himself is coming to ball. He's the captain. Again, need 2 more overs to go. Somewhere close to 100. I think that will be a good target. Field adjustment. Oh, ball was kind of, and then the drop catch again. It was, the ball was in the middle, short ball, he couldn't connect as good as he wanted. Went towards the mid-wicket region. Only good running between the wicket. I think Chargers ने काफी कुछ drop catches किए हैं. उससे जो pressure जो right time था pressure build करने का, they lost that opportunity. Oh, slow ball by Ronnie. Deceive किया batsman को. Batsman read तो किया था slow ball है, but जब ball करीब आई तो और slow हो गई लगता है, और bat पहले ही घूम गया और ball बाद में गई. क्या करते हैं, और एक और ball अच्छी delivery, very close to the stumps. Batsman couldn't connect. Very lucky to be still out there because बहुत close थी stump से, और सिर्फ एक और डॉट बॉल. अच्छी बॉलिंग की है रॉनी ने इस ओवर में. सिर्फ 2 रन दिए हैं और 3 बॉलों पे, तो काफ़ी अच्छा. लुकिंग गुड फॉर चार्जर्स. और एक और बहुत अच्छी बॉल, एक और डॉट बॉल मिलेगी चार्जर्स को. आई थिंक दैट इज अ वेरी गुड ओवर बाय रॉनी, कैप्टन ऑफ चार्जर्स. बॉलिंग स्किल्स दिखाते हुए, और अभी आई एम श्योर अब और एक और अच्छी डिलीवरी थी. कनेक्ट, बड़ा शॉट खेलना चाहते थे लेकिन सही तरह कनेक्ट नहीं कर पाए, स्ट्रेट टू द फील्डर, और इस तरह 1 ही रन बनेगा.
स्कोर जो है वो 83 हो गया है. अभी भी लास्ट बॉल है इस ओवर की. They need to come close to 100 somehow. और बहुत अच्छी डिलीवरी मिस हुई. आई थिंक ही गॉट आउटसाइड एज और 1 रन मिलेगा. बहुत ही अच्छा ओवर करवाया रॉनी ने. ओनली के 4 रन इन दिस ओवर. मच नीडेड ओवर बाय चार्जर्स एंड कैप्टन शोड अप इन द राइट टाइम विद हिज बॉलिंग स्किल्स दिस टाइम. वी चार्जर्स नीड हिम फॉर द बैटिंग एज वेल. स्कोर 84 हो चुका है. जस्ट अ रिमाइंडर, लास्ट नाइट Chargers couldn't score 82 and they lost by 6 runs. देखिए अब क्या करते हैं ये. और उस्मान आए हैं जिन्होंने पहला ओवर भी बहुत अच्छा करवाया था. ओनली गिव 4 runs इन द फर्स्ट ओवर. मोहम्मद स्ट्राइक पे हैं जो 35 रन बनाए हैं इन्होंने 15 बॉलों पे. उन्हीं की स्ट्राइक चाहिए. दे नीड 2 बिग ओवर्स. बहुत ही एक्सीलेंट वेदर और एक्सीलेंट बॉल. गुड कनेक्ट बाय मोहम्मद. टुवर्ड्स द लॉन्ग ऑन और इस तरह ये 6 रन. एक्सीलेंट शॉट. बहुत ही अच्छा शॉट खेला और 6 रन मिलेंगे थंडरबोल्ट्स को. मच नीडेड रन्स. ये जो है लास्ट ओवर है. और एक और ऊंचा शॉट खेला है फील्ड लेकिन नहीं पहुंच पाएंगे फील्डर. और वेरी गुड रनिंग बिटवीन द विकेट. और बॉल जो है didn't travel as much as fielder thought. Just landed in front of him. And they had a good running between the wickets and 2 runs. 9 score moved up to 92. 4 more deliveries. Can they go to 100? मोहम्मद बहुत ही अच्छा खेल रहे हैं. और बहुत अच्छी बॉल. वेरी गुड लेंथ. शफल किया. आई थिंक ही शफल बिफोर द बैट्समैन हैड बॉलर हैड एन आइडिया कहाँ पे बॉल करनी है. तो इस अच्छी डॉट बॉल आई है. 92 पे हो चुका है स्कोर. उस्मान कंटिन्यू करेंगे. और बहुत अच्छा इस कनेक्ट करने में कामयाब. ओवर द हेड ऑफ द लॉन्ग ऑन प्लेयर. 1 more 6 और 98. नाउ दे आर क्लोज टू 100. बहुत ही अच्छा शॉट खेला. मच नीडेड रन्स इन द लास्ट ओवर थंडरबोल्ट्स के लिए. और रन रेट जो है वो 10.34 हो चुका है. और बहुत अच्छी डिलीवरी. आगे निकल के खेलना चाहते थे. couldn't connect well but still got 1 run. Score is 99. Run rate is 10.07. लास्ट बॉल ऑफ द इनिंग आ रही है. और इसी तरह मोहम्मद की 50 कंप्लीट हुई है. एक्सीलेंट बैटिंग बाय मोहम्मद जिन्होंने 50 स्कोर की है थंडरबोल्ट्स के लिए. लास्ट बॉल. बहुत अच्छी डिलीवरी. कनेक्ट करने कामयाब. और इनाम खान ने इस दफा कोई मिस्टेक नहीं की और कैच लेने में कामयाब. और इस तरह जो है टारगेट इज एग्जैक्टली 100. रिक्वायर्ड रन रेट इज एग्जैक्टली 10. इट्स गोना बी एक्साइटिंग गेम. बहुत इंपॉर्टेंट गेम है थंडरबोल्ट्स के लिए भी और चार्जर्स के लिए भी. चार्जर्स विन दिस गेम दे हैव अ pretty good chance to go to semi-finals. If Thunderbolt loses the game, they probably will be out of the tournament because this is their second game. देखिए क्या होता है. क्या करेंगे थंडरबोल्ट्स बॉलिंग में और क्या करेंगे चार्जर्स बैटिंग में. It's a must-win game for them as well. Okay, we will take a quick break and then we will be back with the live action for the second inning
Okay. ठीक है Can you close the door, बच्चे? आप जाएंगे तो हाँ, बस मैंने नहीं हाँ ठीक है Welcome back to the run chase for Chargers. को 100 रन चाहिए जीतने के लिए. Important game है Chargers का Thunderbolts से. और रॉनी के कैप्टन हिमसेल्फ आए हैं खेलने के लिए और उनके साथ इनाम खान है. अस्करी बॉल करवाएंगे. Again, very important game for Chargers. Required run rate exact जो है वो 10 है. Last night Chargers couldn't chase down 82 runs against the One Tigers. Here we go, Askari. Okay, good change I think. कुछ fielding में change, कुछ wait किया. रॉनी जो है वो बहुत ही बड़े हिटर है. बिग हिटर ऑफ द बॉल. और अभी होपफुली यू विल गेट अ चांस टू सी हिम हिटिंग बिग फॉर हिज टीम चार्जर्स. ही इज द कैप्टन ऑफ द टीम हिमसेल्फ. और अच्छी बॉल थी, ऑफ पे थी, पुल किया लेकिन फील्डर वहाँ मौजूद. स्ट्रेट टू द फील्डर एंड नो रन. गुड स्टार्ट, एक्सीलेंट पेस बाय अस्करी. डॉट बॉल्स है वो प्रेशर ऐड करेगी. तैयार सेकंड बॉल के लिए और पुल किया. इस दफा पुल करने में कामयाब और 4 रन मिलेंगे. शॉर्ट बॉल थी, रॉनी ने एक्सीलेंट कनेक्ट किया और 4 रन. जस्ट अ रिमाइंडर, इट्स अ 10 overs गेम. फर्स्ट 3 overs विल बी पावर प्ले. इन पावर प्ले ओनली 2 कैन बी आउटसाइड. सम एडजस्टमेंट टू द फील्ड और कुछ फील्डर एक बाहर भेज रहे हैं. कंटिन्यू. और इस दफा रॉनी ने अच्छा खेला लेकिन यहाँ फील्डर डीप मिड विकेट की तरफ. एक ही रन मिलेगा. और गुड स्टार्ट, गुड बॉलिंग सो फार. अभी भी रन रेट जो है वो रिक्वायर्ड रन रेट इज 10 और रन रेट इज ऑल्सो 10. सो पहला ओवर चल रहा है. अस्करी बॉल का. इनाम खान आएंगे खेलने के लिए. ऑल्सो वेरी वेल नोन प्लेयर इन ह्यूस्टन. लेफ्ट हैंड से खेलते हैं और फाइन लेग की तरफ खेला. एक ही रन मिलेगा. He's not really known to be a big hitter, but he is known to be staying in the field for longer period of time. Inam Khan, Ronnie, अच्छा खेला. फील्डर वहाँ मौजूद. अच्छा फील्ड प्लेसमेंट उन्होंने चेंज की थी और 2 रन बनाने में कामयाब. गुड रनिंग बिटवीन द विकेट. पहले बाउंड्री के बाद देयर वर सम एडजस्टमेंट इन द फील्ड एंड दे गॉट द फील्डर इन द राइट स्पॉट. 2 बॉलें जो रॉनी ने खेली हैं वो उसी फील्डर के आसपास गई हैं. अगेन दिस इज अ पावर प्ले. फर्स्ट 3 overs आर पावर प्ले. यू कैन ओनली हैव 2 आउटसाइड ऑफ द सर्कल. और स्विंग एंड मिस और कीपर से भी मिस हुई और ये बाय का चौका मिलेगा.
इस तरह बाय का चौका मिला है. स्कोर मूड अप टू 12 और एक ओवर के बाद रिक्वायर्ड रन रेट हैज कम डाउन अ बिट to 9.78. Last ball supposed to be a dot, but keeper missed it. Got 4 runs. नए बॉलर आए हैं. मिन हाज इज a new bowler. और इनाम जो है फेस करेंगे मिनहाज को. और बहुत अच्छी डिलीवरी, एक्सीलेंट डिलीवरी. स्विंग हुई बॉल, लेग से स्टार्ट हुई, गई ऑफ की तरफ और इनाम ने डिफेंड किया. सिर्फ एक कोई रन नहीं आया. और इस दफ़ा स्विंग किया, इनसाइड एज लगा और फील्डर वहाँ मौजूद है और सिर्फ एक ही रन बनेगा. रिकॉर्ड रन रेट 10.04. सेकेंड ओवर का गेम जारी. 13 रन बना चुके हैं. देखिए अब क्या होता है. थंडरबोल्ट्स की बॉलिंग pretty decent I would say. इससे पहले जो गेम था वन टाइगर्स का, उसके अगेंस्ट इन्होंने जो है 90 रन्स दिए थे. नाउ दे हैव अ बिगर टारगेट टू डिफेंड, 100 रन्स टू बी एग्जैक्ट. और बहुत अच्छी बॉल पुल करना चाहते थे, मिस किया रॉनी ने और एक कोई रन नहीं बनेगा. अभी तक सेकेंड ओवर का गेम जारी है. 13 रन बने हैं. और बहुत अच्छी डिलीवरी, अब बोल्ड कर दिया. एक्सीलेंट डिलीवरी पे बड़ी विकेट लेने में कामयाब हुए. स्विंगिंग इनसाइड यॉर्कर डिलीवरी और रॉनी क्रॉस खेलने गए और मिस कर गए बॉल को. अगर स्ट्रेट बैट से खेलते तो शायद आउट नहीं होते. बहुत ही अच्छी बॉल थी और बड़ी विकेट लेने में कामयाब. अब्दुल रहीम खान आए हैं बॉलिंग बैटिंग करने. अगेन इससे पहले हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद थे. वेरी वेल नोन प्लेयर ऑफ ह्यूस्टन. बहुत ही आउटस्टैंडिंग बॉल की थी इन्होंने. प्रेशर बिल्डअप हुआ था. इस बॉल से पहले सिर्फ एक ही रन आया था 3 बॉलों पे और ये बॉल इन स्विंगिंग यॉर्कर जो कि टेप बॉल में देखना बहुत मुश्किल नज़र आता है, बट बहुत अच्छी डिलीवरी मिनहाज की. देखिए आप पहले विकेट लेने में कामयाब हुए हैं. रन रेट जो है 10 and a half तक पहुंच चुकी है. रन रेट को उनको वॉच करना पड़ेगा चार्जर्स को. They want to make sure they're staying within the range. Anything over 14 and 15 will add a lot of pressure to the batsman. और अच्छी बॉल ऑफ पे थी. अच्छा खेला अब्दुल रहीम खान ने. अच्छी रनिंग बिटवीन द विकेट. वहाँ पे फील्डर मौजूद थे कवर की तरफ और सिंगल लेने में कामयाब. बहुत अच्छी बॉलिंग कराई मिनहाज ने. इस ओवर में 2 रन दिए हैं और एक खिलाड़ी आउट किया जो कि बहुत ही बड़ी विकेट थी. रॉनी ने बॉलिंग अच्छी की, बैटिंग में उतना कुछ नहीं कर पाए जो कि इज़ नॉट गुड फॉर चार्जर. अगेन बहुत अच्छी डिलीवरी और इनाम खान प्लेस करना चाहते थे लेकिन बॉल स्विंग हुई. इनाम खान ने बताया अब्दुल रहीम खान को कि बॉल थोड़ी स्विंग हो रही है.
वो कनेक्ट नहीं कर पाए और इस तरह सिर्फ कोई रन नहीं आया इस ओवर में, इस लास्ट बॉल पे, और सिर्फ 2 रन आए हैं इस ओवर में और 1 विकेट के बाद। और इस तरह स्कोर 14, रन रेट जो है वो 7, रिक्वायर्ड रन रेट इज 10.75, जो कि काफ़ी, जो बिफोर द इनिंग इट वाज 10, नाउ इट्स 10.75। सो यू कैन इमेजिन कि डॉट बॉल्स से एनी डॉट बॉल विल ऐड अ प्रेशर। ताहा आए हैं लगता है बॉल करने, बहुत ही डिफरेंट यूनिक टाइप की फिंगर बॉलिंग उसमें कह सकते हैं, टेप बॉल में टाइप ही करते हैं। लास्ट मैच में हमने देखा कि काफ़ी अच्छी बॉलिंग की थी अफगान टाइगर्स के अगेंस्ट। सी क्या करते हैं, और बहुत अच्छी बॉल डिफेंड किया अब्दुल रहीम खान ने और कोई रन नहीं मिलेगा। प्रेशर आएगा, एक डॉट बॉल पे खेलेंगे, प्रेशर आएगा, बैट्समैन को प्रेशर हैंडल करना है। स्टिल लॉन्ग वे टू गो, ऑलमोस्ट रिक्वायर्ड रन रेट इज ऑलमोस्ट 11 और वाइड बॉल, आई थिंक इट्स अ गिफ्ट फ्रॉम अ बॉलर, काफ़ी लेग पे थी और उसको कनेक्ट करना चाहते थे अब्दुल रहीम की, शायद बाउंड्री मिले लेकिन कनेक्ट नहीं कर पाए, बट नो डैमेज डन फॉर चार्जर्स। एक एक्स्ट्रा रन मिला चार्जर्स को और पुल किया, लेकिन यहाँ पे फील्डर मौजूद, अगेन एक्सीलेंट फील्ड प्लेसमेंट। ये पहले जो रॉनी ने बाउंड्रीज मारी थी उसके बाद they move the fielder, because keep in mind we are still in power play, this is the last over of the power play, 16 runs हुए हैं और सीधा फील्डर के पास बॉल पहुंची। खेलेंगे और वाइड बॉल, स्विंग हो रही थी बॉल लेकिन स्विंग दैट मच एज बॉलर वांटेड, और इनाम ने इसको जाने दिया और सिर्फ एक्स्ट्रा रन आया। और शॉर्ट बॉल से पुल किया इनाम ने, फील्डर से मिस होगी बॉल डीप मिड विकेट की तरफ और 4 रन मिलेंगे। काफ़ी टाइम मिल गया इनाम को ये शॉट खेलने का, शॉर्ट बॉल थी, शॉर्ट बॉल की इतनी ज़्यादा ज़रूरत नहीं नज़र आ रही। इनाम ने बहुत अच्छा पिक की बॉल और अच्छा प्लेस किया टूवर्ड्स द डीप मिड विकेट फॉर अ बाउंड्री। और स्लो बॉल ऊपर गई है लेकिन कीपर नहीं पहुंच सकेंगे और सिर्फ 1 ही रन बनेगा। अच्छी डिलीवरी थी, स्लो बॉल थी तो शॉर्ट, लेकिन बॉल पेस नहीं था, तो इनाम जज नहीं कर पाए बॉल के पेस को और सिर्फ 1 रन लेने में कामयाब। अब्दुल रहीम खान चेकिंग द फील्ड प्लेसमेंट, नीड बिग रन फ्रॉम अब्दुल रहीम खान। और एक और वाइड बॉल मिस हुई कीपर से, फ्री रन्स वाइड एंड अ बाउंड्री ऑफ अ बाय, फ्री रन्स मिले हैं चार्जर्स को। चार्जर्स के लिए बहुत अच्छा हुआ ये, लेकिन थंडरबोल्ट्स के लिए अच्छा नहीं हुआ। काफ़ी वाइड थी और कीपर से बॉल भी मिस हुई और 4 रन मिलेंगे और स्कोर मूव्ड अप टू 26। रिक्वायर्ड रन रेट इज स्टिल 10.33। लेग पे थी, प्लेस किया टूवर्ड्स द शॉर्ट फाइन लेग और 1 ही रन बनेगा। स्कोर इस तरह 27, रिक्वायर्ड रन रेट इज 10.05, 72 needed in 7.1 overs. Chargers are keeping up with the required run rate, which is a good thing. They want to make sure it's not going out of control. तो अब तक तो चार्जर्स ने जो किया है वो सही लग रहा है। और एक और शॉर्ट बॉल कराई, रन लेना चाहते थे इनाम, सही तरह कनेक्ट नहीं कर पाए और डॉट बॉल। और इसके साथ ही 3rd ओवर के बाद स्कोर हो चुका है 28। They still need 72 runs in 7 overs. Required run rate is 10.29. Good thing is Chargers has a deep batting line.
Altaf Khan is on the Zishan, Altaf Khan. They have a very good, decent batting lineup there. They can still, and good thing they only lost 1 wicket. So still on the close to required run rate. 10.29 is the required run rate, and they're playing with 9.33 run rate at the moment. Change of a bowling. Let's see who's going to come to ball. लास्ट ओवर में 14 रन आए हैं कहा के, थिंक उसमें 5 रन तो सिर्फ बाय के और वाइड के मिले. Was unlucky for the bowler that keeper couldn't collect the ball. देखिए क्या करेंगे आगे. It's going to be an exciting finish. Seems like it's just a reminder. It's an important game for both the teams. Chargers is playing this 3rd game. They won 1, they lost 1. This is the last league game. If they win this game, they have a chance to go to the semi-final. So it's a virtual quarter-final for Chargers. And for Thunderbolts, if they lose this game, that will be their 2nd game, and they will be out of the tournament with 1 game remaining. There's some hold up, seems like some field placement, some adjustment to the field. Abdul Rahim Khan can hit the ball. He can hit very far away. As I said, he's one of the best batsmen in the Houston Cricket League, Division 1. Good ball, placed it towards a short fine leg for a single. इंटेलिजेंटली खेलते हैं अब्दुल रहीम खान. बॉल देख के और मौका देख के, अभी भी टाइम है बहुत चार्जर्स के बाद. दे स्टिल लीड 71 but still have lot of overs to go. 10.39 is the required run rate. तो बहुत बाकी है अभी गेम. Oh, short ball, slow ball थी, short ball और कोई confusion between the runners. They wanted to see the single, but ये है कि नहीं बनाया. और wide ball, बहुत slow ball और बहुत short ball. और slow ball mid wicket की तरफ खेला और एक ही रन. Good fielding in the deep और एक ही रन बनेगा. इनाम जो है वो सिंगल लेना चाहते थे, but I don't think there was single there. इसकी रन होता, suicidal run to be honest. लेकिन अब्दुल रहीम खान ने कॉल किया कि कोई ज़रूरत नहीं है भागने की, बहुत गेम बाकी है. फवाद ने अभी तक तो अच्छी डिसेंट बॉलिंग कर रहे हैं और आगे निकल के बड़ा शॉट खेलना चाहते थे, लेकिन और शायद 2 रन बनाने में गुड रनिंग बिटवीन द विकेट और 2 रन बनाने में कामयाब. Score moved up to 33 और शॉर्ट बॉल बहुत टाइम था अब्दुल रहीम खान को स्पॉट पिक करने का, लेकिन नहीं पिक किया. ऑफ कोर्स ही इज वेरी वेरी डिसअपॉइंटेड. एज यू कैन सी he wanted to hit big and he got all the time in the world to pick a spot where to hit this ball and he completely missed it. So just the 1 run. डिफरेंट टाइप की बॉल करा रहे हैं, स्लो भी करा रहे हैं, बहुत टेम्पटिंग बॉल भी है और स्कोर भी नहीं हो रहा है, तो कुछ समझ में नहीं आ रहा. और एक और ऊंचा शॉट खेला है, देखिए कौन नीचे आता है बॉल के, लेकिन कोई भी नहीं आया और बॉल खुद आ गई फील्डर के पास और 2 रन बनेंगे.
मेरे ख्याल में एक चांस हो सकता था अगर फील्ड जो है फील्डर्स पे अटेम्प्ट करते, बट ही प्रेफर टू स्टे होल्ड बैक हिमसेल्फ एंड जस्ट वेंट फॉर फील्डिंग. और फुल टॉस इनाम ने खेला टूवर्ड्स द फाइन लेग, डीप फाइन लेग, लेकिन एक ही रन बनेगा. गुड फील्डिंग और एक्सीलेंट थ्रो फ्रॉम द डीप जस्ट फॉर अ सिंगल. और इस तरह ओवर भी ख़त्म हुआ. 9 रन आए हैं इस ओवर में. Required run rate 10.5. The good thing is Chargers is staying within their required run rate. 4 runs, 37 runs with the loss of 1 wicket. Inam at 11 and 10 with the 10 balls. Abdul Rahim Khan 7 runs, 7 balls he faced. अब कुछ discussion among Abdul Rahim Khan and Inam Khan, some strategy कि क्या करना चाहिए. I think all they need is just go with the same run rate and don't lose too many wickets. अभी भी बहुत कंट्रोल में है गेम. 63 needed in 6 overs. They have 9 wickets in hand. Just a reminder, Thunderbolts scored 99 runs in 10 overs. The target is 100. Now target has moved down to 63 in 6 overs and they have 9 wickets in hand. And they have a good batting lineup. They bat deep and it's a very important game for Chargers. They must win this game to go to the playoff. और स्लो बॉल इनाम ने कनेक्ट किया लेकिन 2 रन बनेंगे. गुड रनिंग बिटवीन द विकेट. 2 रन लेने में कामयाब. और एक और स्लो बॉल थी और आउटसाइड तरफ गई. इनाम ने खेला ऑफ की तरफ टूवर्ड्स द लॉन्ग ऑफ. और फील्डर में मौजूद और सिर्फ एक ही रन लेंगे. Required run rate is 10.59. Again, well under control. The good thing is Chargers are controlling the required run rate. They don't want it to be way too high to add a pressure to the batsman. Thunderbolts के लिए they need wickets also. फ्लाइट बॉल बहुत टाइम मिला लेकिन खेल दिया लॉन्ग ऑन की तरफ और मिस फील्ड. और शायद 30 रन भी आ सकते थे लेकिन 1 शॉर्ट रन बाय द अंपायर. सो एक ही रन बनेगा. और रिवर्स स्वीप खेलना चाहते थे और फील्डर के पास गई टूवर्ड्स द डीप मिड विकेट और अच्छी फील्डिंग और 2 रन लेने में कामयाब. अच्छी बॉलिंग कर रहे हैं फराज. 6 रन दिए हैं अब तक 4 बॉलों पे. They need a big hit also, but I think still under control. फ्लाइटेड बॉल कनेक्ट किया और सही तरह कनेक्ट नहीं कर पाए. आउटसाइड एज लिया और स्ट्रेट टू द फील्डर. टुक अ इजी कैच. नाउ विद दैट अब्दुल रहीम खान इज आउट ऑन 8. Chargers lost their second wicket and required run rate has reached to 11 for the first time in this inning. 57 needed in 5.1 overs.
Let's wait for the next batsman. Salman is the next batsman. Required run rate is 11.03. फराज ने बहुत अच्छी बॉलिंग की, बहुत ही स्लो बॉल. इससे पहले अब्दुल रहीम खान ने रिवर्स स्वीप ट्राई किया था. Now this time he went big but couldn't read the pace of the ball and got the outside edge, straight easy catch for a mid wicket fielder. Again very slow ball. Inam Khan played towards the cover, just a 1 run. So end of a successful over by Faraz. He only given 7 runs. The required run rate is 11.20. The pressure is building up. Fawad came to the ball. Now this is the second over. First over he gave 9 runs. Play towards the deep mid wicket and just for a single. Somebody needs to start hitting from chargers. They need big hits. Couple of big hits or big over will reduce the pressure on chargers for sure. Required run rate is 11.38. Slow ball, placed towards a deep mid wicket region. Wanted a second run, but sent back by Inam. Big. Okay, placed towards the fine leg. It could go all the way, but fielders coming around it, and just 2 runs. Good fielding, good throw, very good throw by the fielder. So 2 runs added to the Chargers total. बहुत ही इंटरेस्टिंग गेम हो रहा है. अगेन चार्जर्स के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट गेम है. दे हैव टू विन दिस गेम टू गो टू द सेमीफाइनल्स. और अगेन स्लो बॉल और डीप मिड विकेट की तरफ खेला, बट फील्डर वहाँ मौजूद हैं. सिंगल्स won't hurt Thunderbolts as much as Chargers want. सलमान खेलेंगे. ब्रेक की बॉल खेली सलमान ने. Required run rate 11.77, almost touching 12. Some field adjustment. और दफा फिर स्लो बॉल, और ये रन लेना चाहते थे इनाम खान. सलमान ने मना कर दिया और इस तरह इनाम खान रन आउट हो गए. और ही इज कमिंग बैक. I think there's some issue with the scoring. They got Abdul Rahim. They got Inam out earlier. They need to fix it. Probably will fix it later on. So, but now they lost the 3rd wicket. The required run rate is 12.24. It's climbing up very fast. Now, Ahsan Shah is in the middle. वो भी बहुत ही अच्छे प्लेयर हैं. नोन सीम्स लाइक Ahsan Shah. Let's see, we'll know the name. और अच्छा शॉट खेला और 4 रन के लिए बॉल का वेट किया इस दफ़ा और मिडल करने में कामयाब हुए और 4 रन मिलेंगे. और Ahsan Shah आए हैं इन द मिडल. ऑल्सो वेरी वेल नोन प्लेयर इन ह्यूस्टन. बिग हिटर हैं.
माइनर लीग के लिए भी खेलते हैं और ह्यूस्टन क्रिकेट लीग में ह्यूस्टन स्टैलियंस की तरफ से खेलते हैं। क्वाइट डग आउट बाय चार्जर्स, प्रेशर बिल्ड हो रहा है। 11.75 पर ये एक बाउंड्री, वेल नीडेड बाउंड्री, टाइमली बिल्कुल बाउंड्री मिली है चार्जर्स को। एहसन शाह फेस करेंगे खान। पहले ओवर में उन्होंने सिर्फ 7 रन दिए थे और 1 विकेट भी ली थी। तो लेट्स सी व्हाट ही डज। फ्लाइटेड बॉल और बड़ा शॉट खेलना चाहते थे। स्लो बॉल में यही होता है कि यू नीड टू जनरेट योर ओन पावर और टाइमिंग्स में चाहिए, सही प्लेसमेंट चाहिए। टेप बॉल में तो आपको और ज़्यादा पावर चाहिए। शफल किया, कनेक्ट करने में कामयाब हुए और बहुत ही अच्छी फील्डिंग लॉन्ग ऑन की तरफ और सिर्फ 1 रन मिलेंगे। अच्छा शॉट था एसन का, लेकिन वहाँ फील्डर वहाँ मौजूद थे और बहुत ही अच्छी फील्डिंग की इन्होंने डीप लॉन्ग ऑन की तरफ और सिर्फ 1 ही रन बना। सलमान खेलेंगे। देखिए सलमान को बड़े शॉट चाहिए और स्लो बॉल डीप मिड की तरफ खेला, फील्डर वहाँ मौजूद और दूसरे रन के लिए भागे और बहुत अच्छी रनिंग बिटवीन द विकेट, गुड रनिंग बिटवीन द विकेट। 2 रन लेने में कामयाब। रिकॉर्ड रन रेट जो है वो इस बॉल से पहले 12.55 12.57 हो चुकी है। 2 runs every ball almost। और एक और स्लो बॉल, मिस की बॉल और अंपायर ने वाइट कॉल की। अच्छी बॉल थी और पढ़ने के बाद और बाहर की तरफ गई और अंपायर ने वाइट कॉल की। और इस दफ़ा बॉल अंदर आई। सलमान ने अच्छा कनेक्ट किया लेकिन डीप मिड विकेट की तरफ खेला और वहाँ फील्डर वहाँ मौजूद थे। और रिकॉर्ड रन रेट 12.6, ऑलमोस्ट टचिंग 13। अच्छी बॉलिंग कराई फराज ने, बहुत ही अच्छी बॉलिंग करा रहे हैं। पेस नहीं दे रहे हैं। दे वांट बैट्समैन टू जनरेट ऑल द पेस। और बॉल टर्न भी हो रही है, कभी आप बाहर की तरफ कभी अंदर की तरफ, जो कि बहुत अच्छी बात है। चेंजिंग द एंड, कमिंग अराउंड द विकेट। बहुत अच्छी बॉल। इस दफ़ा बॉल बाहर की तरफ निकली, इससे पहले वाली बॉल अंदर आई थी। तो बहुत अच्छा डिसीव कर रहे हैं और ही इज एंजॉयिंग हिज बॉलिंग एज यू कैन सी। और इस दफ़ा अंदर आई और कनेक्ट नहीं कर पाए सही से और अंपायर ने लेग बाय कॉल की और लेग बाय पे कोई रन नहीं है। बहुत ही अच्छा चल रहा है मैच। स्कोर जो है रिकॉर्ड रन रेट 14 हो चुके हैं। स्टिल आई वुडंट से आउट ऑफ द रीच ऑफ चार्जर्स, बट दे नीड सम बिग ओवर्स। चार्जर्स के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट गेम है। इफ दे लूज दे आर प्रॉब्ली गोना बी आउट। They have, this is their 3rd game. They have played 2, won 1 game and lost 1. So we'll have to see the run rate कि किस run rate पे उन्होंने बनाया है. But most likely they will be out if they don't finish. They don't win this game. अच्छा चल रहा है मैच। 3 विकेटें गिरी हैं चार्जर्स की और 42 needed from 3 overs. 14 to be required run rate is 14 और लेग की तरफ आई थिंक 1 रन मिलेगा। अच्छी बॉल थी। सलमान बिग शॉट खेलना चाहते थे। एहसन वहाँ भी मौजूद हैं। दे नीड बिग रन्स, दे नीड बिग शॉट्स। कभी सिंगल से दे वोंट हर्ट थंडरबोल्ट्स। चार्जर्स को चाहिए बड़े शॉट और सिर्फ 3 ओवर हैं
और इस दफा कनेक्ट करने में कामयाब हुए और एसन का पहला 6. इस दफा पेस मिला एसन को. ही लाइक्स पेस कमिंग टू हिज बैट एंड ही कनेक्टेड वेरी वेरी वेल फॉर अ 6. मच नीडेड 6 फॉर चार्जर्स. 65 हो चुके हैं. दे नीड 35 रन. 13.12 रिक्वायर्ड रन रेट है. और एक और इस दफा बॉल स्विंग हुई. अच्छी बॉल थी बट इट हैज अ पेस. एसन की लाइकिंग का पेस था बट बॉल थोड़ी स्विंग हुई और बहुत अच्छी बॉल कही ताहा ने. और अच्छी बॉल कनेक्ट किया. प्ले टूवर्ड्स द डीप लॉन्ग ऑफ. 2 रन लेना चाहते थे एसन बट सलमान ने मना किया और सिर्फ एक ही रन लिया. रिक्वायर्ड रन रेट बैक टू is over 14 now. 14.57. Swing ball. Salman able to connect it towards the deep mid wicket और boundary मिलेगी. Good shot, good connection by Salman. Fielder वहाँ मौजूद थे but ball को cleanly he couldn't collect और इस तरह एक और बाउंड्री मिली चार्जर्स को. रिक्वायर्ड रन रेट इज 13.85 नाउ. 30 रन्स नीडेड इन 2.1 ओवर्स. क्या करते हैं अब आगे की सिचुएशन. इसके बाद वाला ओवर इज गोना बी अ क्रिटिकल ओवर. बॉल अच्छी बॉल स्विंग हुई लेकिन सलमान कनेक्ट करने में कामयाब. 2 रन लेंगे. गुड रनिंग बिटवीन द विकेट. बहुत अच्छी रनिंग की और ओवरथ्रो लेना चाहते हैं लेकिन नहीं लिया. एसन ने वापस भेज दिया सलमान को और 2 रन लेने में कामयाब. रिक्वायर्ड रन रेट इज एग्जैक्टली 14. 28 needed in 2 overs. They have lots of batting, so wickets are not a problem. But they need this over is going to be very critical for Chargers. 72 बना चुके हैं. 28 रन चाहिए लास्ट 2 ओवर्स में. Some hold up. Chargers जो है they have a hard ball team also. They also have a soft ball team और टेबॉल टीम. ये काफ़ी जगह खेलते रहते हैं टूर्नामेंट्स में. वेरी एक्सपीरियंस प्लेयर्स हैं इनके पास. एहसन शाह जो मिडिल में खेल रहे हैं. इज अ वेरी वेल नोन प्लेयर इन ह्यूस्टन. माइनर लीग में भी खेलते रहे हैं. There's some discussion seems like. Not sure what is the hold up. बहुत ही क्रिटिकल स्टेज पे गेम आ चुका है. 2 overs to go. 28 needed. 14 run is required run rate. ये कहाँ तक पहुँचता है. Important game है चार्जर्स के लिए. They need to win this game to go to the semi-finals or stay in the competition.
if they lose the game, they they're probably going to be out because Thunderbolts have one more game after this. Okay, seems like all sorted. Not sure what was the hold up. There's some discussion going on. Required run rate is 14. बहुत ही important critical stage में game आ चुका है. Very important game for Chargers. They have to win this game to stay in the competition. Thunderbolts के लिए भी जो है ये important game है. If they lose this game, they're going to be probably out of the tournament. They still have one more game after this. आज पहले ओवर में सिर्फ 2 रन दिए थे. बहुत अच्छी बॉलिंग. एक्सीलेंट बॉल. बहुत अच्छी डिलीवरी की मिनहाज ने. स्ट्रेट टू द गुड फील्डिंग बाय मिनहाज. एक्सीलेंट डिलीवरी. और वहाँ फील्डर वहाँ मौजूद हैं. आई थिंक दे आर अपीलिंग इट्स अ लेग बाय बट इट्स 1 रन. गुड फील्डिंग इन द डीप. और एक ही रन मिलेगा एसेंस को. मिनहाज ने अपने पहले ओवर में सिर्फ 2 रन दिए थे और 1 विकेट भी ली थी. तो इट्स अ गुड बॉलर. दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट ओवर. रिक्वायर्ड रन रेट हैज जंप टू 16.20. और excellent delivery. Cash का था chance, but I think the keeper dropped the ball, or you can still dot ball, which is critical for Thunderbolts. Required run rate has jumped to 18. Now they are in a serious trouble. Chargers has a very well-known players from Houston. They have lost the game to Hawaii Tigers. Now if they lose this one, they can probably be out. Play towards the D at long on, and they want to take 2 runs. They're able to get to 2 runs. The score has moved up to 75. Required run rate is 18.75. क्या होगा? 25 runs in 1.2 overs. It's probably a no ball. No ball call की अंपायर ने. और फ्री हिट भी मिलेगी. Important over है. Required run rate is 17.25. 2 रन नो बॉल के मिले. 3 रन आए हैं इस बॉल पे. तो इम्पॉर्टेंट बॉल थी ये. और बहुत अच्छी डिलीवरी. कोई डैमेज नहीं कर पाए. फ्री हिट में एहसन शाह और डॉट बॉल मिली. और इस तरह रिक्वायर्ड रन रेट इज ऑलमोस्ट टचिंग 20 नाउ. आज जो है वो बहुत ही अच्छी बॉलिंग करा रहे हैं. He's doing the swing the ball as well. और कनेक्ट करने में कामयाब हुए. But the fielder is there. It's going to be looking for 2. Just a single. Good fielding in the deep. और इसके साथ ही और नंबर 9 has finished. अब इनको 22 रन चाहिए मैच जीतने के लिए.
लास्ट देखते हैं लास्ट ओवर कौन कराएगा। अस्करी आए हैं लास्ट ओवर कराने के लिए। पहले ओवर में उन्होंने 8 रन दिए थे। अस्करी ने पहले ओवर में 8 रन दिए थे और अभी रिक्वायर्ड रन रेट इज 22। चार्जर्स इज इन ट्रबल, दे नीड 22 रन्स to win the game and stay in the tournament. If they lose this game, Hassan Shah is on strike. He is known to hit big. अभी उनकी सब बैटिंग चाहिए, सारी परफॉर्मेंस चार्जर्स को। 22 रन जो है बड़ा स्कोर होता है, आसान नहीं है लास्ट ओवर में 22 बनाना। होल्ड अप, Hassan Shah was not ready। बहुत ही बीच में खड़े हैं हसन। लेट्स सी वो हिट करना चाहते हैं लेग की तरफ और अच्छी बॉल कराई और डॉट बॉल लिया उन्होंने और रिक्वायर्ड रन रेट इज नाउ ओवर 26। they need sixes every ball now। और वाइट थी, ऊपर गया, कैच लेने के लिए नीचे आएंगे और 6 रन मिलेंगे। 4 बॉलों पे स्कोर उनको मच नीडेड 6 था एसन का। एसन ने बहुत ही अच्छा शॉट खेला। नाउ दे नीड 16 रन लास्ट 4 balls। PB still in the reach, anything is possible। और अच्छा शॉट खेला लेकिन सिर्फ सिंगल मिलेगा। एक और 2 रन दूसरे लेने के लिए वापस बोल्ड है और 2 रन लेने में कामयाब। तीन बॉलों पे 14 रन चाहिए। 3 big sixes। स्क्रीन अच्छी बॉलिंग की है, अच्छे कंट्रोल बॉलिंग और विक बोल्ड कर दिया। एक्सीलेंट बॉलिंग, पुल करना चाहते थे टुवर्ड्स द मिड विकेट और विकेट एज लगा टुवर्ड्स द विकेट और इस तरह हसन शाह अपनी विकेट लूज कर गए और अब मैच इज ऑलमोस्ट ओवर फॉर चार्जर्स। 2 बॉलें बाकी हैं। लेट्स सी इसके बाद रन रेट की क्या पोजीशन होती है। लास्ट गेम जो बाकी है इसके बाद वन मोर गेम आफ्टर दिस। थंडरबोल्ट्स के लिए भी वो गेम इम्पोर्टेंट है। थंडरबोल्ट्स आर स्टिल इन द टूर्नामेंट और चार्जर्स आर इन ट्रबल। ज़ीशान आए हैं खेलने के लिए, बहुत ही अच्छे बैट्समैन हैं लेकिन इस वक्त जो है 2 बॉलों पे 14, अगर वो नो बॉल और वाइट बॉल ना करें दे स्टिल हैव अ चांस। और बहुत अच्छी बॉल, सिर्फ 1 ही रन मिलेगा और इस तरह लास्ट बॉल पे 13 रन्स चाहिए। बहुत ही अच्छी परफॉर्मेंस बाय थंडरबोल्ट। दे आर बीटिंग अ गुड टीम ऑफ ह्यूस्टन चार्जर्स और इस तरह आखिरी बॉल पे 1 ही रन मिलेगा और इस तरह ह्यूस्टन चार्जर्स अपना 3rd गेम हैज लॉस्ट। थंडरबोल्ट्स वन बाय 12 रन्स। गुड विक्ट्री बाय थंडरबोल्ट्स। बहुत ही इंपॉर्टेंट गेम था थंडरबोल्ट्स के लिए। इस तरह जो है चार्जर्स आर इन ट्रबल नाउ। We'll see what will happen. We'll see the net run rate later on. But this concludes the coverage for this game.
So we'll be right back with one more game for tonight. That will be the last game coming up. Stay tuned.